Okay, so hello everyone, I'm Sudipta Ma'am, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So tell me, how are you everyone? केमिति सब अच्छा preparation केमिति कौन चली ची? And first thing, आज क्लास ପାଇଁ सब ready ହେଇକି ଆସିଛ ନା ମଝିରେ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବ ପୁଣି nature will call you. So ଏ ସବୁ option ନାହିଁ ତ whatever mobile ନେଇକି ଯିବ ଠିକ ଅଛି because ଆଜିର session ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ important. तो लेट न करी के हमें स्टार्ट कर देबा जो माने लेट रे जॉइन करछंती से मानकर लॉस से माने रिवीजन करि रे ओके तो फर्स्ट थिंग आपण माने जानि छंती जदि आपण माने एसो बैच नेबा को चाहूचंती अनुशासन बैच आपण माने परचेज करि परिबे विथ द प्राइस 1999 एंड जदि आपण माने जूनियर असिस्टेंट पे प्रिपरेशन करूछंती ताहाले आपण माने बैच परचेज करि परिबे 1199 सहकारी बैच जदि पुलिस एसआई पे आपण माने प्रिपरेशन करूछंती 399 आपण माने नै परिबे 20 सेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपण माने पाई परिबे ता सहित क्लास कोर्स भी फ्री रहउची एंड ए सब ऊपर आपण मानकर आउ गोटे ऑफर अछि जोटा कि आपनकर होची महापैक जदि आपण माने महापैक परचेज करछन ताहाले डेफिनेटली 2 वर्ष जाय आपण माने प्रिपरेशन विदाउट एनी सिंगल पेनी प्रिपेयर करि परिबे एंड ऑल द पैकेजेस विल अराउंड द इनसाइड द महापैक हैला लाइक शेयर करि देला अरे वाह हम बोला की अछि सब ओके आसा The first question आपण मानक सामने रे who discovered the term ecosystem माने कोन बुझुछ आगो ecosystem माने कोन कहले देखि जते डिफरेंट टाइप्स रा आपनकर प्लांट्स हेले एनिमल्स हेले आपनकर गोटिए सराउंडिंग रे रहंती गोटिए एनवायरनमेंट रे रहंती ताकू हमें इकोसिस्टम कहूचे माने गोटिए सिस्टम भितरे गोटे इकोनॉमिकली बैलेंस करी कि रहिबाटाकू इकोसिस्टम कहि देला ताहाले एठी आपनको देछि कोन ऑप्शन ओडम एल्टन आर्थर जी टैम्सली या फिर क्लीमेट्स देखंतु ओडम जदि आपनको क्वेश्चन पचारुछि कि हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी कोन ना फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी जदि छुआ क्वेश्चन पचारुछि ताहाले हमें रिलेट करै परिबा काहाकू ना ओडम का सहित सेम थिंग जदि आपनको एल्टन पचारुछि हमें जदि कहबा हु टर्म माने आपनकर एनिमल इकोलॉजी हैला जे कि लैटन आपनकर डेवलप करथले जो आपनकर फूड चेन एनिमल इकोलॉजी हैला एंड आपनकर फूड चेन हैला एगुडा को हमें रिलेट करै परिबा काहाका सहित फूड चेन्स और एनिमल इकोलॉजी स्पेसिफिकली ओके ए टर्म करथिले एल्टन करथिले तो राइट आंसर आपनकर एठी कोन हेसियो मते किए कहि परिबो ना जी टैम्सले आपनकर करिथिले आर्थर जी टैम्सले आपनकर ए जो इकोसिस्टम वर्ड टाकू डिस्कवर करथिले वो डिस्कवर द टर्म इकोसिस्टम केबे करथिले ना 1935 रे वर्ड को कोन कॉइन करिथिले यदि क्लीमेंट्स हमें कहूचे या हमें कोन रिलेट करछे ना आपनकर सुपर ऑर्गेनिजम्स जेंति कि आपनकर कोन बायोटिक सक्सेशन थ्योरी जदि क्वेश्चंस रे पचारुची द फेमस कोन बायोटिक सक्सेशन थ्योरी ओके तो केमिति सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने डिफरेंट तांकर हेरिडिटरी कैरेक्टर शिफ्ट करूसंदी थ्रू द डीएनए तो एही ऊपर आपनकर थ्योरी दैछन कि क्लीमेंट हम हमें कहूचे दैट इज द फुल नेम इज द फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चला आपन मानक भाई समथिंग को वेरी गुड इवनिंग तो राइट आंसर आपनकर हे गेले 1935 रे ऑथर जी टैम्सले नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुआ द इंटरनेशनल अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली एतिकी फास्ट जिबा ना आउ फास्ट करिया मत माने कहिबो मते कोंतु द इंटरनेशनल अर्थ डे आपनकर ऑब्जर्व होची एनुअली को तारीख रे आपनकर ऑब्जर्व होची जदि आपण जुलाई 22 कहूचे ताहाले आको हमें को डे भाबरे सेलिब्रेट करछे ना वर्ल्ड ब्रेन डे कोथि पाई ना आपनकर जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ अछि ब्रेन इज रिलेटेड विथ न्यूरोलॉजी जते हमर बॉडी भीतर न्यूरॉन्स अछि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाई कि कनेक्ट हेसन द ब्रेन थी जदि गोटे मक्सा भी कामुरछि पिंपुटे कामुरछि हम ब्रेन इंस्ट्रक्ट करछि बा हाथ को कामुरछि डाहाण हाथ जाई पीटी डाहाण हाथ को कामुरछि बा हाथ जाई पीटी तो जो इंस्ट्रक्शन आसे थ्रू द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरॉन्स आर इंटरैक्ट माने इनडायरेक्टली हमर कनेक्टेड हिसन समस्त नॉट इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमर कनेक्टेड का सहित ना ब्रेन सहित ताहाले हम कहि परबा जुलाई 22 को को डे भाबरे ना जदि हमें कहिबा ब्रेन डे सेलिब्रेट करा जाए ब्रेन डे कोथि पाई ना गोटे हेल्दी न्यूरोलॉजिकल साइंस ऊपर सेलिब्रेट करबा लागि न्यूरॉन्स माने को नेकी बाकी रहला राइट आंसर आपनकर अप्रैल 22 मे 22 रे आपण बान जानि संती इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंटरनेशनल लिखि दै छै ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मते कहबो जून 22 ता को कोन को आसे जल्दी मु गोटे लिखुची तम माने गोटे को मु गोटे लिखुची तम माने गोटे अटेम्प्ट नियो ताहाले कोन कहि परिबा हां 22 मार्च कहले वाटर डे को कहि परिबो एबे आसा 22 जून कहले तम माने कोन बुझी परिबो
ना वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कोथि पई ना हाईलाइट करबा लागि द क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट मानकू सो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कहबो माने आपण माने रिलेट करिवे कहा सहित ना जून 22 सहित समस्ते एग्री एग्री क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियंतु एंड यस फर्स्ट टाइम by celebration आपनकर कोठी हेतिला इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1970 रे आपनकर our power our planet होची कोन ना द थीम ऑफ 2026 सबु जिंस मन रखिबे कोठी सेलिब्रेट फर्स्ट हेतिला को ईयर रे सेलिब्रेट हेतिला व्हाट इज द रिसेंट थीम ए सबु जिंस आपनकर एग्जाम पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट हैला नेक्स्ट क्वेश्चन करके समस्त गुड मॉर्निंग मते कह दियंतु द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज इज आल्सो नोन एज जेतबेले माइग्रेटरी स्पेसीज मानु को हम अकाउंट करछु द कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पेसीज को हम कोन कहि परिबा स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट ना ये ग्लोबल ट्रीटी जे कि आपनकर कहा कहछु ना प्रोटेक्टिंग ओवर द ह्यूमन हेल्थ ये आपनकर कहा को नै कि ना ह्यूमन हेल्थ को नै कि आपनकर प्रोटेक्ट प्रोवाइड करूची और प्रोटेक्टिंग टुवर्ड्स दैट जदि आपन को कहूची द बेसल कन्वेंशन ताहाले हम ताको रिलेट करि कहा से दिस इज अगेन ए ट्रीटी बट ये रेगुलेट कोन कहूची ना ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स मानको एंड कहिले मते ए जो ट्रांस बाउंड्री वर्डटा लिखिली टिके तम मानको डिफिकल्ट लागुची कि बुझिया पई मते कहले ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स माने कोन कहूची एंड बेसल कन्वेंशन यार रोल कोन ना जेते सब हाजर्डस वेस्ट आपनकर आसी जाउची तांकर डिस्पोजल को नै कि आपनकर ए बेसल कन्वेंशन अछि जोटी जोटी आपनकर अलिया आबर्जना पकोचन ताको केमति डिस्पोजल हेई परिबा केमति डिग्रेड करी हबो तो एई सब को नै कि आपनकर कोन ना बेसल कन्वेंशन सो राइट आंसर आपनकर कन्वेंशन द माइग्रेटरी स्पेसीज हे गला बॉर्न कन्वेंशन केबे हेतिला ना इट वाज साइंड फर्स्ट टाइम पई मन रखंतु जर्मन सिटी रे हेतिला 1979 1979 बाकी रामसर कन्वेंशन द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स 1971 रामसर ईरान सिटी आपण माने जानि छथि इंडिया रो फर्स्ट हला आपनकर चिलिका एंड केवलाडियो राजस्थान एडा आड हे छथि 1981 रे ए सब विषय ऑलरेडी वी नो next चलो so right answer 1979 it is an intergovernmental treaty under the United Nations Environmental Program that aims to conserve the terrestrial marine and the avian migratory species throughout their range first time पे आपनकर को केबे माने आपनकर सॉरी established हेतला 1979 but entered into force meaning functioning condition को आसला 1983 को जेतबेले अदर कंट्रीज माने सब साइन करथले MOU एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलन तो समस्त न्यू स्टूडेंट आज क्लास रे आसो मते को देखिबा आज क्लास रे केते पिला रहुचो ओके देखो मते को द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स एटा अपन को कोन पचारछि ना ओजोन लेयर रो थिकनेस थिकनेस कहूची माने कोन ओजोन लेयर रो मोटेटा कोन मापुचे अरे हां सेटा भी तो मपा जाउची न हले अपन को ओजोन लेयर रे होल होची बोली केमति हमें जानुचे ता मींस अपन को गोटे डेंसिटी अछि सेटा तले कवर माने एंड ही जाउची हमें जानुचे ओजोन लेयर रे अपन को होल होची ता माने अपन को जो डॉप्सन कहूची फर्स्ट ऑप्शन को चलो ए जो डॉप्सन कहूची या माने अपन माने केबे सुनी संदी एटा को एलिमिनेट जदि अपन माने केबे सुनी भी नांती के रे मैप ओजोन लेयर को केबे कोथरे कोन मापी हुए ताको एलिमिनेशन प्रोसेस रे भी देखो हॉर्स को अपन माने जानि संदी कोन हॉर्स को अपन माने कोथरे मापु संदी ना फ्रीक्वेंसी जदि पचारा जाउची जदि क्वेश्चन अपन को फ्रीक्वेंसी कोथरे मपा जाउची पचारा जाउची अपन माने हर्स सहित रिलेट करछनी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करछि कोन ना वन साइकिल पर सेकंड कहिला अपन माने हर्स को बुझौछंदी सेम जदि अपन को कैंडेला कहउछि अपन माने जानिसंदी कोन दिस इज अ एसआई बेस यूनिट कहा को नै कि अपन करबो ना लुमिनस इंटेंसिटी जदि अपन को क्वेश्चन में पचारुछि through what we can measure the luminous intensity then we can go through the candela that is the SI unit yes or no जदि डेसिबल कहउछि ताहाला हम जानि दिस इज द साउंड पे अपन को पता जाउछि माने अपन इंटेंसिटी कहार ना साउंड वेव रा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स रा त एई सब जदि अपन माने जानि छथि एटा को अपन माने जानि नाथि सरीला ऑड वन आउट करि दियो सेहिति पय कहउछि सब बेले चारटा ऑप्शन को अपन माने मन रखंतु सो दैट इजीली अपन माने ऑड आउट माने ऑड वन आउट करि परिबे सो डॉप्सन यूनिट अपन माने करे आपको हमरा कोन कहै जाय ना DU बोली कहै जाय ए डॉप्सन यूनिट थ्रू रे हमें ओजोन लेयर रो थिकनेस को मापी थाए क्लियर एति जिंस माने वर्टिकुलर थिकनेस को मापा जाय थाए सो डॉप्सन दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ द एटमॉस्फेयर वन डॉप्सन यूनिट रिप्रेजेंट a layer of pure ozone that would be 0.01 mm thick at standard temperature and pressure एति जिंस तमे माने क्लियर तो चलो निजबा नेक्स्ट क्वेश्चन म देखो कहि एशियन एलिफेंट कोन कहला ना एशियन एलिफेंट विषय is placed under which category of the IUCN red list of the threatened species IUCN red list कहला माने कोन गोटे रेड डाटा बुक अछि जोतरे डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया रे गोटे स्पेसिफिक
स्पेसीज माने देखा जांदी एंड से माने थ्रेटेन्ड कंडीशन रे पळे आछन धीरे धीरे आपनकर विलुप्त प्राय ग्रुप आड़ को पळे आछन से माने को स्पेसीज रु बिलोंग करंती को फैमिली रु बिलोंग करंती ओरिजिनली ताकर कोन सेइठु ओरिजिन हेची अदर जगह रु ओरिजिन हेची आउ को एरिया रे सेइ टाइप रो स्पेसीज अछंती कि तो तांको विषय एक्स वाई जेड एवरीथिंग गाइस डाटाबेस मेंटेन करा जाय कोथरे रेड डाटा बुक रे सो दैट जदी आगु को जाई कि से माने इनवास हे जाउछंती ताहाले आमे किछि न्यू स्पेसीज सेते बेले आमे आगु को जाई कि देखिबा या फिर डिस्कवर हेबे न्यू स्पेसीज सब तो दुनिया रे बहुत सारा स्पेसीज होने एमिति बहुत सारा स्पेसीज को हमें मध्ये जानि ना साइंटिस्ट माने जानि नांती तो नुवा नुवा स्पेसीज आसुछन्ते तांकर जेनेटिकल कोऑर्डिनेट्स हमें बनै परिबा जेनेटिकल कोन माने रिलेशन बनै परिबा कि को फैमिली रु को स्पेसीज रु बिलोंग करते तो एंको ऊपर सबुतिक डाटा बुक कोठ रुए ना रेड लिस्ट डाटा बुक रे आपनकर ऐड होई कि रुए तो एइटे पचारि छ आपनकर कोन जो एशियन एलिफेंट आपनकर कोन अछि अंडर द आपनकर कोथरे ना थ्रेटेन्ड स्पेसीज कैटेगरी पळै छी एक्चुअली आपनकर को कैटेगरी थ्रेटेन्ड तो सब हबो इवन क्रिटिकली एंडेजर्ड विथ थ्रेटेन्ड वल्नरेबल एंडेजर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड सब आपनकर कोन थ्रेटेन्ड कैटेगरी किंतु जो एंडेजर्ड ता होची आपनकर कोन ना एशियन एलिफेंट तो एक्जेक्टली द वर्ड आपनकर डिफाइन करूची को कैटेगरी रे ना एंडेजर्ड कैटेगरी रे करूची कारण क्रिटिकल एंडेजर्ड कहूची माने कोन ना एटा गोटे भी स्टेटस बट एटा आपनकर कोन ना रिजर्व फॉर सम स्पेसीज जोडा में कोन फेसिंग करछथि एक्सट्रीमली हाई रिस्क आपनकर एंडेजर्ड कहूची माने गोटे लेवल ता ऊपर को टिके जेंति आपनकर गुड बेटर बेस्ट सेमिति आपनकर एंडेजर्ड वल्नरेबल तापर आसीला क्रिटिकल एंडेजर्ड एति जिंसा बुझी पाले आपन माने पक्का एटा आपनकर कोन फर्स्ट फेज हे गला एटा आपनकर सेकंड फेज एटा आपनकर थर्ड फेज एति जिंसा आपन माने बुझिले आ जदी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड माने कोन कहूची माने एटा इंडिकेट करछ आपनकर स्पेसीज सर्वाइव ओनली इन द कैप्टिविटी or in a cultivation or controlled population outside in the historic range हमें ताको रिलेट करै परबा बहुत ही कम रेंज रा आपण माने कोठी गोटे ताको देखिया को पाइबे एटा हेले हमें ताको रिलेट करबा दैट इज द एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड एति के जिंसा बुझी पाला जदी आपण को क्वेश्चन पछारे गला को कैटेगरी को कोटा कुहा जाय ताले माइंड रे किछि आईडिया आसिला एंडेजर्ड कोटा क्रिटिकल एंडेजर्ड कोटा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कोटा या फिर वल्नरेबल कोटा श्योर देखो सो राइट आंसर आछि स्टेटस होचे एंडेजर्ड पॉपुलेशन होची डिक्रीजिंग करछन्ती धीरे धीरे जो माने धीरे धीरे डिक्रीज करन्ती से माने कोन ना वल्नर आपनकर एंडेजर्ड रो वल्नरेबल को जानती वल्नरेबल आपनकर क्रिटिकल एंडेजर्ड को जानती क्लियर नेक्स्ट चलो तो मते कोंतु एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय तो एसिड रेन आपनकर कोडी हुए ना पॉल्यूशन तो क्रिएट करे ही कोथरे क्रिएट करे ना डेफिनेटली एनवायरनमेंट क्रिएट करे किंतु एसिड रेन आपनकर एक्चुअली रे आसे कोथरु माने किछि दिटा आपनकर एलिमेंट हो किछि दिटा आपनकर केमिकल रिएक्शन हो एथिरे तो आपनकर एसिड रेन हेतिबो रेन माने आपनकर वाटर दैट मींस आपनकर कोन H2O और हेवी रेन हे गले आपनकर D2O हे गला माने ड्यूटेरियम को हम रिलेट करूचे बट हियर आपनकर क्वेश्चन को पचाछि ना डेफिनेटली हम रिलेट करबा का सहित ना सल्फर डाइऑक्साइड एंड आपनकर कहा सहित नाइट्रस ऑक्साइड सहित हमें छिबा दीज आर द गैस रिएक्ट विथ द एटमॉस्फेरिक वाटर एटमॉस्फेयर रे जो वाटर वेपर आपनकर प्रेजेंट थांती एंड जो ऑक्सीजन आपनकर प्रेजेंट थांती से माने को सहित नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करूची से माने रेस्पेक्टिवली नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रे चेंज हो जाती का सहित ना आपनकर एटमॉस्फेरिक वाटर प्लस ऑक्सीजन सहित जते बेले रिएक्ट करूचंती एते की जिंसा क्लियर नेक्स्ट चलो सो sulfur dioxide and the nitrogen oxide मते कहंतु द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कोन कहिची ना द UNCED कथा कहिची also known as the Earth Summit was held from 3 to 14 June 1992 in which of the following cities एते बेले फास्ट आपनकर सेलिब्रेट करा जाउथले ए जो आपनकर विभिन्न प्रकार कॉन्फ्रेंस हो जे एनवायरनमेंट को नेकी फर्स्ट टाइम जते बेले सेलिब्रेट करा गला 1992 कथा कहूची 13 रु 14 पर्यंत जदि आपनको टोकियो पचाउची गाइस ये आपनकर 1997 रे सेलिब्रेट करा जायथिला जदि बेजिंग पचाउची ये आपनको 1995 रे सेलिब्रेट करा जायथिला देन जदि आपनको कोन ग्लासगो रे ना राइट आंसर आपनकर एक्चुअली रियो डी जेनेरियो हबो कारण रियो डी जेनेरियो रे आपनकर ही हेतिला ग्लासगो रे आपनकर रिसेंट कॉप 26 हेतिला आपनकर माने अछि आपनकर ग्लासगो होची कोन गुटे स्कॉटिश सिटी स्कॉटलैंड रो स्कॉटिश सिटी हमें एकु रिलेट करू छै ग्लासगो को आपनकर कॉप 26 मिशन आपनकर ग्लासगो रे हेतिला 2021 रो हैला 26 हेले 2021 ना हां 21 आपनकर ग्लासगो रे हेतिला 2020 कॉप 26 रो 2021 रे हेतिला क्लियर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आपनकर हेतिला राइट आंसर आपनकर रियो डी जेनेरियो सो द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलरली नोन एज द अर्थ समिट टू प्लेस इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील ले हेतिला
from the June 3rd to 14, 1992 and कौन सब एजेंडा थिला have mentioned here. You can have a look after the end of the session. Next चला मते कहंतु ओजोन लेयर is present in which of the following layers of atmosphere. atmosphere तो हमें जानी छे troposphere to लेके exosphere पर्यंत किंतु जे particularly ओजोन लेयर कथा कहूची ताहाले हमें कोन रिलेट करिबा जदि देखंतु फास्ट थिंग कहदिबा जदि मेजोस्फियर कहूची माने हमें कोन कहि परिबा याकू हमें कहूची दिस इज द कोल्ड मिडिल लेयर याकू हमें कोन कहूचे ना कोल्ड मिडिल लेयर कहिला हमें माने बुझुचे का सता मेजोस्फियर जोथे आपनकर कोन हुए ना एटमॉस्फियर प्रायोरिटी आपनकर कोन ब्रेकअप हेसा मेटियोर्स माने आपनकर जोठी आसंती मेटियोर्स माने कंटेन करंती ता सदा हमें रिलेट करबे बहुत ही ओजोन लेयर आपनकर एठी थाई बहुत थिन अमाउंट र थाई माने बहुत कंटेन करे थिन अमाउंट र लेयर जदि एक्सोस्फियर कहूची पूरा आउटर लेयर बुझी गले आपन माने किंतु जदि ओजोन लेयर कथा कहूची सब बेले आपन माने कहा से तना स्ट्रेटोस्फियर से रिलेट करिवे अबाउट 90% ऑफ द अर्थ ओजोन इज कंसंट्रेटेड in the lower region of the atmospheric layer of the stratosphere. तो troposphere भीतर आपण माने stratosphere जाउछन between the troposphere stratosphere भीतर आपनकर 90% of ozone contain रहुची atmosphere. Clear? चलो so right answer आपन कोन हे गेला ना stratosphere sits directly above the troposphere the layer will lie in. Okay आपनकर ozone layer कोठी थाउची ना sun harmful रे आपनकर सब जिंस कोठी ए जो स्ट्रेटोस्फियर रहुची ता भीतर आपनकर कवर अप हे जाउची एंड सब बेले कहूची कॉमन लाइन क्वेश्चन ऊपर आसिले कॉमन लाइन कहा भीतर होची बिटवीन द मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर 100 किलोमीटर भीतर आपनकर कॉमन लाइन होची एंड कॉमन लाइन परठू हमें स्पेसफुली कंसीडर करछ क्लियर चलो नेक्स्ट नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आसो को क्लास मजा लागुची ना नहीं मते को मते को नॉइज पॉल्यूशन पतेरुची दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज आपण जदे हर्ट्ज कथा कहितिले आपण माने रिलेट का सता करिवे जदे बेले हर्ट्ज कहूची आपण माने रिलेट करूछथि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड कोन ना एठी आपण फ्रीक्वेंसी कथा कहि देबे हर्ट्ज कथा कहिले फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और एनीथिंग फ्रीक्वेंसी सहित आपण माने रिलेट करिवे डेसिबल कहूची माने आपण माने कोन रिलेट करिवे ना जेते बेले आपण को कोनोसी जिंस साउंड सहित रिलेट आपनकर नॉइज सहित साउंड सहित नॉइज सहित रिलेट करिवो ताहाले हम ताको डेसिबल सहित रिलेट करिवे इवन कैंडल हेला एम्पियर हेला ऑलरेडी मु रिलेट करछि कैंडल कहले कोन कहितली ना आपनकर लुमिनस इंटेंसिटी एम्पियर हेला आपनकर कोन ना आपनकर इलेक्ट्रिक करंट रो फंडामेंटल एसआई यूनिट कहले आपण माने कहि परबे एम्पियर को हम यूनिट करूछे हैला नेक्स्ट चलो मते कोंदु द स्पीशीज ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज कोन होइछि सबुति को बुझाइथिली कोटा को कोन भाषा फिर भी हेबे देखिया कहिलो देखि केते दूर आपण मानकर मने अछि हाईएस्ट नॉइज पॉल्यूशन ओके मते कहि दियंतु जेते बेले आपण को पचारछि द स्पीशीज ऑफ plants and animals which are found exclusively in a particular area are known as जेते बेले जेते बेले आपण को extinct species कहउछि that means हम रिलेट करबे कोन ना they are the organism that have completely कोन ना ये आपण को completely died out हे जाई छथि ताकू हमें पूरा extinct species सहित रिलेट करे देबा with no living individuals माने with no living individuals left on the earth तांको हमें पूरा रिलेट करे देबा माने ऑड एंड आउट करबा एक्सटिंक्ट स्पीशीज सहित किंतु जो एक्सोटिक स्पीशीज कहउची ता माने कोन दे आर द नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम आउटसाइड देयर नेचुरल हिस्टोरिकल रीजंस माने जदी एठी आजी आपण देखछन्ती गोटे स्पीशीज पर्टिकुलरली गोटे एरिया रे एठी आजी देखा जाउछन्ती भुवनेश्वर रे आपण माने आउछि वर्ष पर देखि भुवनेश्वर रे नथिबे से माने जाई कोठी गंजाम रे थिबे ता माने से माने तांकर प्लेस चेंज करथुबे तांको हमें कहबा दैट इज द एक्सोटिक स्पीशीज क्लियर ताले राइट आंसर आपनकर कोन हेला ना एंडेमिक स्पीशीज हला दिस आर द यूनिक इकोलॉजिकल स्पीशीज हमें कहि परिबा रेस्ट्रिक्टेड होंती पर्टिकुलर गोटे रीजन सहित तांको हमें कहबा दैट इज द कोन ना आपनकर एंडेमिक स्पीशीज एति की जिंसा क्लियर पेंडेमिक हेला ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके क्लियर पेंडेमिक स्पीशीज हेला दैट टर्म रिलेट्स विथ द कोन आपनकर इन्फेक्शियस डिजीज हेला आपनकर स्प्रेड हेइछो जेंति ग्लोबली स्प्रेड होचेंति हमर कोरोना वायरस हेइतिला ताक बेले हमर पेंडेमिक को जाउतिला हेला ता सदा मन रखिबो नेक्स्ट माने कोंतु which of the following is a multilateral environment agreement that aims to protect human health and the environment against the adverse effect of the hazardous waste कहिथिले आपण मानकु जते बेले फर्स्ट ऑप्शन आसीथिला ह्यूमन हेल्थ को नेकी आपण मानकु आराम से कहिथिली जते बेले स्टॉकहोम गोटे पुणी कहूची जते बेले स्टॉकहोम कहूची आपण मानकु रिलेट करबे कोन दैट रेगुलेट्स द एलिमिनेशन and the restriction कहा को नेकी आपण करो ना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मानकु नेकी कहा को नेकी ना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मानकु नेकी एति की जिंस बुझी पालो दैट मींस आपण माने कोन कहि परिबे ना पीओपी फुल फॉर्म होची पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एति की जिंस बुझी परिबो ताकू हेले स्टॉकहोम कन्वेंशन जदि आपण को काटी जाना कहूची ये आपण कोन कहूची ना ये भी फोकस करूची प्रोटेक्ट करूची किंतु काहाकू ना केमिति हमर डेवलप हे परिबो द मराइन एनवायरनमेंट एंड द ग्रेटर आपण कोन
जेतिक आपनकर कार्बन रीजन अछि बट आपण माने मराइन सहित रिलेट करे दियंतु मराइन कहूची माने आपण माने अछि बट एक्वाटिक सहित हैला देन जदि आपण कहूची वेना कन्वेंशन ये आपनकर कोन वेना कहूची माने आपनकर अर्थ ओजोन लेयर ये आपण माने सिंपली ओजोन लेयर सहित कन्वर्ट कर देले बाकी रहले आपनकर अडुआ ना बासल कन्वेंशन क्लियर नेक्स्ट चलो सो बासल कन्वेंशन सहित बासल सीड आपण माने खाइ चंदी आपनकर चिया सीड बासल सीड जानिथिबे बासल सीड ब्लैक कलर चिया सीड आपनकर टिके माने एमती ब्लैक डॉटेड व्हाइट डॉटेड एमती की थिबो तो बासल सीड की खाए मनिष ही खाए ना तो मनिष सहित रिलेट करले आपण माने बासल कन्वेंशन को रिलेट कर देबे सल्ला लॉजिक रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मते कोन व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एनुअली आमे वर्ल्ड वाटर डे को केबे सेलिब्रेट करछे क्विक हां 2000 मसिया रे आपनकर कार्टेसियन प्रोटोकॉल एनएक्टेड हेथिला यस जल्दी आंसर दियो वर्ल्ड वाटर डे कहूची माने चलो पूर्ण थरा आसो फेब्रुआरी मास रु स्टार्ट करो 2 आपनकर 2 फेब्रुआरी को हम को डे भाबे सेलिब्रेट करछे की मन रख परिबो जदि हम पचरुची वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जदि पचरा जाउची ताहाले हम रिलेट करि परिबे 2 फेब्रुआरी सहित कोन नै मते को किंतु वर्ल्ड वेट आपनकर वाटर डे यूनाइटेड नेशंस रे एनुअली सेलिब्रेट करा जाउची केबे ना 22 मार्च रे एबे जस्ट रिलेट करेगी तो मानु कहितली 5 जून हेले एबे जस्ट आपनकर गला कोन ना एनवायरनमेंट डे गला 16 सितंबर हेले कोन कहि परिबो ना इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ता माने आकु हमें कोटे ना ओजोन डे बोली सेलिब्रेट करिबा डे एंड डेट एंड इट्स इंपोर्टेंट इज अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव गोटे क्वेश्चन फॉर श्योर आसीबो क्लियर एति की जिंस यस ओजोन डे नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो ओजोन इज अ रिलेटिवली अनस्टेबल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ which atoms of oxygen तले ओजोन आपण माने को कहूची ता माने ओजोन ता केतेटा ऑक्सीजन ना केतेटा मॉलिक्यूल हेले ओजोन हबो मु ऑलरेडी तो माने कहि साची ओजोन माने O3 लेखा होची दैट मींस आपनकर तीनटा ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ द ऑक्सीजन विथ द केमिकल फार्मूला कोन ना O3 क्लियर आते कि ऑक्सीजन जदि O2 हे गला ड्यूटेरियम देन आपनकर हे गला कोन सॉरी आपनकर हां देन आपनकर O3 हे गला परे ओजोन को हम रिलेट करू छे क्लियर आते कि जिंसा क्लियर जिबा नेक्स्ट चलो मते को ओजोन इज द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ऑफ द 3 atoms of the oxygen 3 मते कोंतु which one of the following gases is responsible for ozone layer depletion in the stratosphere जेते बेला हम स्ट्रेटोस्फीयर कथा कहू जे ओजोन लेयर आपनकर डिप्लीशन होउची किंतु मेन रीजन आपनकर जे ओजोन लेयर डिप्लीशन ना कोन हे पारे कारण आपण माने कहि परिबे द ओजोन गैस हमें ताको कहि परिबा ता माने कहा को हमें कहू जे कोथि पय कहू जे ना जो एसी हमें लगो जे रेफ्रिजरेटर यूज करते सेही थ्रू ही तो आपनकर रिलीज होची दैट मींस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दीस आर द केमिकल्स रिलीजेस द क्लोरीन्स फ्रॉम क्लोरीन एटम्स अंडर द यूवी रेडिएशन जोटा कि आपनकर जाई कि माने व्हिच रैपिडली ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ओजोन लेयर आफ्टर दैट इट बेकम्स द होल क्लियर है कि जिंस नेक्स्ट चलो मते कोंतु व्हिच इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर कोन एटी कहूची आउ थरे क्वेश्चन टाको बुझो आंसर आपण माने आराम से करि देबे पछारिला व्हिच इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक्स बुझी पारुचो हरद एठी पछारिची बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर यदि वाटर तार न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होउची तार कोन नेचुरल एजिंग होउची कि जदि होउची से मेथड को हमें कोन कहि परिबा से मेथड देखो सैपोनिफिकेशन गोटे प्रोसेस करी कहूची बिल्कुल देखो यूट्रोफिकेशन ही राइट आंसर हबो कारण यूट्रोफिकेशन हमें जानचे दैट इज द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ऑफ कोन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ऑफ होउची जोटा कि आपनकर डेंस अल्गल ब्लूम आपनकर फॉर्म हे जाय देखिथिबे आपनकर हद माने जोठी पानी जमी के रहि जाय पूरा कोठू आपनकर एक्सट्रैक्ट हुइनी पानी या फिर आपनकर कोन माने किछि इनपुट की आउटपुट आपनकर पानी हुइनी सेठी आपनकर ग्रीन कलर अल्गल ब्लूम फॉर्म हे जाय सेमिति हेले हमें कहबा दैट इज द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस बट जदि क्वेश्चन आसी गला सैपोनिफिकेशन ताहाले कोन कहबो ना एटा भी गोटे केमिकल प्रोसेस कोन हुए ना एई प्रोसेस रे आपनकर सोप तयारी हुए दिस इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ कोन ना मेकिंग सोप आपण माने जो साबुन यूज करूछंती नो मैटर आपनकर कोन देहरे लगौछंती तो बॉडी सोप हैला या फिर आपनकर कोन वाशिंग सोप हैला तो जे कोनोसी सोप आपनकर सैपोनिफिकेशन प्रोसेस रे यूज को माने प्रोसेस रे आपनकर तयारी करा जाय बाय रिएक्टिंग विथ द फैट्स हैला ऑयल्स हैला एंड आपनकर जे कोनोसी अल्काली बेस हैला देन जदि आपनको कहया वाला सेम पार्जोलाइजेशन ताहाले जो पार्जोलाइजेशन को कोन जानछंती आपण माने सॉरी पार्जोलाइजेशन केडी सर बुझैथिले ऑक्सीजन डिसॉल्व अमाउंट कमी जीवो आज्ञा कोन दुते पार्जोलाइजेशन माने बुझिसंती कोन कहूची एठी आपनकर
ना ये गोटे कॉम्प्लेक्स सॉइल फॉर्मेशन आमे कहिबा जो प्रोसेस रे की ऑर्गेनिक मैटर माने एंड मिनरल्स माने लीचिंग प्रोसेस रे जानती लीचिंग इनटू द वाटर कोन ना वाटर रे जते बेले आपण माने लीचिंग प्रोसेस देखुचंती से लीचिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल हेला एंड वाटर हेला ताको हम रिलेट करबा दैट इज द पर्जोलाइजेशन क्लियर यूट्रोफिकेशन माने जानलो एंड आपनकर हिस्टोरिफिकेशन दैट मींस आपनकर नियाती ओटे केमिकल रिलेशन हेतिबो कहा सहित दिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड जदि आपन को पचारला कोथि पई ना टू फॉर्म एन एस्टर एंड द वाटर जते बेले आपन को पचार जाउची व्हाट इज द हिस्टोरिफिकेशन सिंपली कहि परिबो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन व्हाट ना अल्कोहल एंड द आपनकर कोन कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर बिटवीन वाटर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड कोथि पई ना रिलीज करिवे कोन आपनकर ये रिलीज करिवे कोन जदी सॉरी वाटर कहि दोछ आपनकर वाटर तो रिलीज होबो ना अल्कोहल रिलीज करिवे आपनकर वाटर रिलीज करिवे आपनकर कोन वाटर ता सहित आपनकर आउ कोन रिलीज हे परिबो वाटर एंड ईस्टर हैला एटा आपनकर बाहर क्लियर एति की जिंस क्लियर नेक्स्ट चलो so eutrophication is the process where the body of water becomes overlay enriched with the minerals and the nutrients जहा भी आपनकर रहिला केमिति हुई आपन माने जानिथिबे डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल्स माने आपनकर कोन पानी भीतर कोन ताको जदी डेड ऑर्गेनिजम्स पानी सहित मिसे सेठी आपनकर न्यूट्रिएंट रिच हे जाय ओके डिसॉल्व हे जाय ऑक्सीजन सेथिरे नेक्स्ट मते कोंतु सल्फरस स्मॉग इज आल्सो नोन एज सल्फरस स्मॉग को हमें आउ कोन कहूचे जल्दी प्रणाम लुका बाबू आंसर दियंतु मते कोंतु एठी जे क्वेश्चन आपन को पचाची सल्फरस स्मॉग इज आल्सो नोन एज सल्फरस स्मॉग को हमें कोन कहि परिबा कोन कहिचा कोन ऑप्शन 1 को देखंतु लंडन स्मॉग हमें कहि परिबा की काहेकि टोक्यो स्मॉग कहि परिबा दिल्ली स्मॉग कहि परिबा अच्छा दिल्ली स्मॉग को हमर कोन कहि परिबा कहले हमर जो माने कोन कैपिटल अछि इंडिया रो तो दिल्ली रे आपनकर गोटे स्मॉग देखा जाय जेटा हमें कोन जानछे गोटे भारी सबल माने बर्निंग प्रोसेस हमर देखिबा जे ना फोटोकेमिकल स्मोक और आकु वेहिकल रे आपनकर इमिशन हुए तो याकु रिलेट करबे एटा विंटर लेज एंड कहबा जे विंटर हेज कॉज्ड बाय दिस तो याकु छाड़ दे आपनकर फोटोकेमिकल स्मोक हे गला बट इट इज सल्फरस स्मोक होची ताकु आपन माने मन रखंतु लंडन स्मोक बोली कहसे हां दिल्ली हेले फोटोकेमिकल मते कोंतु लंडन हेले आपन माने मन रखंतु लंडन स्मोक को हमर आउ कोन कहै छै ना सल्फरस स्मोक बोली कहै छै हेला लॉस एंजेलिस रे जो स्मोक देखा जाय सेटा आपनकर येलोइश ब्राउन कलर रो फोटोकेमिकल स्मोक जोटा आपनकर सोलर रेडिएशन द्वारा ट्रिगर हेकी रिएक्शन करथा नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित एंड आपनकर हाइड्रो कोन ना कार्बन्स माने सहित रिएक्ट करिकी येलोइश आपनकर कोन येलो ब्राउन कलर रो स्मोक देखा जाय सेटा लॉस एंजेलिस रे देखा जाय क्लियर है कि जिंस चलो so right answer होची the term originated from the great smog of London in 1952 it typically occurs in cool humid climates and is characterized by the high concentration of sulfur oxides clear है कि जिंस नेक्स्ट को क्वेश्चन टिके टफ लागुची ना बुझिया को इजी होच मते को टफ लागुची क्वेश्चन या फिर टफ लागला पर भी त माने बुझी पारुछ मींस आई एम दैट मच कैपेबल कि आपण मान को बुझेई पारुछ मते खाली एति के कहै हैला have any trick to remember माधव सबुथरे आउ ट्रिक खोजिले हबो की सबुथरे ट्रिक खोजिले लॉस एंजेल्स सहित आपण रिलेट करि परिबे कहा सहित फोटोकेमिकल किंतु येलो ब्राउन कलर फोटोकेमिकल आपनकर टोक्यो रे जदी पसारा गला टोक्यो रे आपनकर फोटोकेमिकल स्मोक सबुथरे आपनकर डिफरेंट फोटोकेमिकल स्मोक ही देखा जानते किंतु तार कॉजेस एंड तार कलर आपनकर डिफरेंट थाए जेमिति कि लंडन रे आपनकर कोथि पय देखा जियो लंडन रे आपण मान जानि कोल्ड क्लाइमेट आपनकर ऑलवेज दिल्ली रे त हमर सब बेले कोल्ड क्लाइमेट नो तथापि देखा जाय स्मोक त तार कलर अलगा हेतिबो लंडन रे जदी सब बेले वेदर आपनकर कोल्ड थाए ता परे भी देखा जाउछ त माने तार रीजन अलगा तार कलर अलगा हैना आसा तो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर बाय phasing out the chemicals that deplete it को ओके आंसर दियो ओके डन कौन है राइट आंसर मॉन्ट्रियल 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी गुड सो राइट आंसर आपनकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ताली कीटो प्रोटोकॉल सहित हमर माने कोन रिलेट करि परिबी ना ये आपनकर यूएनएफसीसीसी तीनटा
सी हे गले आपण माने कीटो प्रोटोकॉल को रिलेट करिवे ये भी आपनकर रिड्यूस करबा लागि ग्रीन हाउस गैसेस को एटा आपनकर कोन फॉर्म हेथिला ओके बाकी आंसर कन्वेंशन ऑलरेडी जानिछन आपण माने वेटलैंड को नै कि जदी पेरिस एग्रीमेंट कहूची आपनकर कोन ना आपनकर एटा भी क्लाइमेट को नै कि बट ग्लोबल वार्मिंग आपनकर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रहिबा पई कोन यार टारगेट यार होची कोन ना ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रखिबा पाई बिलो क्लियर एते जिंस क्लियर प्रणाम 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 समस्त को प्रणाम ओके नेक्स्ट चलो so the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer is a landmark international treaty adopted in 1987 its primary goal is to protect the ozone layer by phasing out the production and consuming of the ozone depleting substances such as the chlorofluorocarbons and etc. Next mate koi diyantu which of the following organization publishes the red list of threatened species red list of threatened species कहले छुआ आमे कहा को रिलेट करबा सुकांत बाबू वेरी गुड मॉर्निंग समस्त को गाइस गुड मॉर्निंग कहीं केते लेटर सब जॉइन होचो आधा घंटे ला क्लास स्टार्ट हेलानी बा टिके टाइम रे आसलारी हबनी पाठ पढा होची तो ना त मानकु जळ छत्र मिलुछु मते जदी पाठ पढा होची टिके सीरियसली पाठ पढले हबनी हां आसो हो देखंतु आपण मानकु सुविधा कंफर्टेबल जोन छाडले सिना त माने पाठ पढिबो आसो तो कहिछि आपण को रेड लिस्ट डाटा लिस्ट कहिछि माने आपण माने आयुषन को कोन रिलेट करियो व्हाट इज आयुषन स्टैंड फॉर इट अभी क्वेश्चन आसीबो दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द कोन नेचुरल सॉरी आपण को नेचर मेंटेनेंस ओके कंजर्वेशन ऑफ द नेचर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एते रेटा होछि आपण को आयुषन फुल फॉर्म हैला जेटा कि वर्ल्ड रो मोस्ट आपनकर कंप्रेहेंसिव इन्वेंटरी हमें कहि परिबा जोथि आपनकर जति कि ग्लोबल स्पीसीज माने अछंती आपनकर कंजर्वेशन स्टेटस रे सेमान को मेंटेन करा से जदि यूएनईपी कहउछ आपनकर यूनाइटेड नेशंस कोन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपनकर एनवायरनमेंट ऊपर को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कहउछ माने आपनकर कोन दैट इज द वर्ल्ड वाइड फंड अच्छा ये वर्ल्ड वाइड फंड रो काम कोन पुनी ना ये भी गोटे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर दैट इज एन एनजीओ संस्था आपनकर ये गोटे जे कि आपनकर फंड प्रोवाइड करछि काहाकू ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भाई आपनकर ये फंडिंग करूछि जदि यूएनडीपी कहउछ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी आपण मान जानि संती एलिमिनेट करूछि काहाकू ना डेवलपमेंट माने प्रॉपर्टी को जदि प्रॉपर्टी को आपन को रखिबो ताहाले डेवलपमेंट हो ता माने यार काम कोन ना प्रॉपर्टी को रिड्यूस करबा इनइक्वालिटीज माने को कोन ता सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट रे कन्वर्ट करबा एते कि जिंस क्लियर चलो नेक्स्ट मते कोंदु वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपनकर सेलिब्रेट करा जाउछि को दिन उडा करे स्पीड हे जाउछि जदी छुआ मते दया करी कि आंसर माने सॉरी मते कहि देबे कि मैम स्पीड होउछि टिके स्लो कर दियंतु सब स्लो करबी हैला मते कोंदु वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड अरे कोन डबल लिख दे छ कह दियो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहिछि माने आपनकर केबे सेलिब्रेट करा जाय जल्दी 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 आंसर दियो मते कोन हबो WWF रो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड WWF फॉर द स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वाइड फंड रो स्विट्जरलैंड रे हैला यार आंसर कोन हबो ना मार्च 3 रे होची आपन कर कोन ना अडॉप्टेशन हेतिला आपन कर साइट्स ए जो साइट्स आपन को क्वेश्चन पचारियो मन रखंतु कोन साइट्स रो माने कोन कहिला मते देखि दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड आपनकर कोन जे सब फौना एंड फ्लोरा माने अछि समस्त को नै कि आपनकर साइट्स ता भी इंपोर्टेंट 1975 रे फ्लोरा एंड फौना को नै कि एग्जैक्टली एसटीआर ओके जदी अप्रैल 4 कहला एटा भी गोटे इंपोर्टेंट डे कि मते कहि परिबो जेते सब स्ट्रीट एनिमल्स माने अछंती दिस इज द इंटरनेशनल स्ट्रे एनिमल्स डे हमें कहि परिबा इंटरनेशनल स्ट्रे एनिमल डे द स्ट्रीट एनिमल्स एमान को नै कि जदी मे 5 कहू आपण माने कोन जानसंदी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे एटा कहले आपण माने कहि परिबे दैट मींस आपनकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी माने फर्स्ट टाइम पे वर्ल्ड हाइजीन डे को सेलिब्रेट करिथिला एटा भी रिलेट करि परिबे देन फेब्रुअरी 5 कहला माने आपण माने कोन जानसंदी ना आपनकर वर्ल्ड कोन रे कोडे हबो एटा आपनकर माने पडनी तो माने रिलेट कर दबो फेब्रुअरी 5 माने थिला मे 5 फेब्रुअरी 5 ठीक है रिलेट कर दो माने पडनी हैला नेक्स्ट देखो मते कोंतो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन वेटलैंड डे कहिथिलो ऑलरेडी ऑन अच्छा व्हिच डेट एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वेटलैंड डे
वेटलैंड डे आपनकर केबे ऑब्जर्व करूची किए ना यूनाइटेड नेशन सब वर्ष 4 फेब्रुआरी तो बिल्कुल हबनी एटा आपनकर वर्ल्ड कैंसर डे हे गला कोन जदि वर्ल्ड कैंसर डे कहूची ताहाले आपन माने रिलेट करि परिबे या सहित छुआ वर्ल्ड कैंसर डे हेले आपन माने रिलेट करि परिबे यस और नो 2nd फेब्रुआरी वेरी गुड 19 केबे हेइतिला फर्स्ट टाइम केबे हेइतिला चंद्रशेखर एसकेआर दिजन रेखा जी अच्छा पूरा टपाटप कंपटीशन 1971 रे फर्स्ट टाइम बाय 1971 2nd फेब्रुआरी आपनकर कोठी इरानियन सिटी ऑफ रामसर रे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हेइतिला दैट्स व्हाई देखो रामसर कन्वेंशन बोली कहै जाउची ओके माने फर्स्ट टाइम पे अडॉप्ट हेइतिला 3rd फेब्रुआरी कहले एमति किछ आपनकर त मने पड़नी मने पड़ले आपन माने ऐड करिवे नेक्स्ट चलंतु मते कहतो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया to break down the organic matter present in the certain volume of a sample of water is called तबरे गोटे sample of water हमें कलेक्ट करछि सतरे आपनकर जेति कि भी वॉल्यूम थाउ कोन क्वेश्चन पचाछि ना ऑक्सीजन रिक्वायर करूछि गोटे बैक्टीरिया को टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करबा लागि डिकम्पोज करबा लागि किए दरकार बैक्टीरिया दरकार फंगस माने दरकार तो एठी जो फंगस को छाडी दियंतु बैक्टीरिया कथा कहछि बैक्टीरिया को जति कि रिक्वायरमेंट दरकार वाटर से सॉरी ऑक्सीजन रिक्वायर करूची सेटा आपनकर कोन कहसे बायोलॉजिकल कोन ना बीओडी और द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें कहूचे दैट इज मेजर्स अमाउंट ऑफ dissolved oxygen needed by the aerobic biological organisms aerobic reaction anaerobic reaction the oxygen present रे जो reaction हुए ताको हमें aerobic reaction कहूचे anaerobic माने ऑक्सीजन नहीं anaerobic है ना तो anaerobic कहले absent of oxygen ने जो reaction हुए ताको आपनकर anaerobic ऑक्सीजन आपनकर सॉरी एनारोबिक प्रोसेस को आजे आपनकर एरोबिक हेले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपनकर हबो है ना नेक्स्ट चलो हे डी कोन कहछि ए मुंडा फुंडा अरे बायोलॉजिकल अच्छा सॉरी ऑक्सीटोसिन कहि देछि ऑक्सीटोसिन एठी लिखि छि हम देखिबे देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हां डी हेला ए नाही रे एठी ऑक्सीटोसिन अछि तमे भी मोहले अंधा जाई छ ऑक्सीटोसिन अछि ऑक्सीजन हैला एही छोटो छोटो मिस्टेक करी के एग्जाम रे आसीबो नाही काइंडली देखिबो ऑक्सीटोसिन लिखाइसी ऑक्सीजन हमको दरकार हैला हां 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 चलो नेक्स्ट मते कहि दियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट मींस आपण कोन डिग्रेड होबोनी बिल्कुल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहछि माने कोन डिग्रेड होबोनी ए जो लीव्स आपण को रहिला एटा तो डिग्रेड कंडीशन अछि तो रैपिडली डिकम्पोज हुए बाय द बैक्टीरिया और ने बैक इनटू द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपण को आसे विद इन द वेरी फ्यू वीक्स रे आपण को कंप्लीट हे जाय प्लास्टिक बोतल ही आपण को ऑर्गन आउट ताकि पेपर हेला फ्रूट हेला दिस ऑल आर द कोन ना बायोडिग्रेडेबल पेपर कथा आपण माने भाबुतबे कि पेपर होउची कि यस मैम जेहेतु वुड रो बाहर छि ता माने वुड रो पार्ट सब जिंस आपण को डिकम्पोज्ड हैला नेक्स्ट चलो So non-biodegradable waste refers to the material that cannot be broken down, decomposed by the natural biological process like the bacterial or fungi. माने चाहिले भी ताको डिग्रेड करि परिबे नै हैला नेक्स्ट वाला कोन स्नो लियोपार्ड इज placed under which category of the Asian red list of threatened species जेमिति कि एशियाटिक लायन को आपण माने मने रखिले ठीक समिति जदि स्नो लियोपार्ड को पसार गला ताहाले आपण माने को रिलेट करिवे ना ये आपनकर 2017 मसिया रे वल्नरेबल ले अछंती कोठी ना वल्नरेबल ले अछंती प्रायतः हम जदि तारा काउंट करछे 2500 भले आपनकर स्नो लियोपार्ड पर्यंत प्रेजेंट अछंती सेति लागि ताको आपण वल्नरेबल क्राइटेरिया रे रिलेट करेबे एक्सटेंड इन द वाइल्ड एटो एक्सटेंड इन द वाइल्ड अपन माने कहि दिनी कोन रिलेट करछ दैट मींस पर्टिकुलर रीजन आपनकर कोन होसंती ना कंप्लीटली समाने डाइड आउट हे सारिसंती माने गोटे रीजन रो डाइड आउट हे कि आउ गोटे रीजन आपन माने पाइबे किंतु सेही एग्जैक्ट रीजन रे आपन माने पाइबे नाही completely died out in the nature but survive in a captive facilities over some other reasons यदि critically endangered कहूची ता माने आपनकर कैटेगरी फॉर द स्पीशीज आपनकर कोन फेसिक माने फेस करूचंती इमीडिएट हैला एक्सट्रीम रिस्क हैला सेमान कमे critically endangered group रे कोन ऐड करूची ओके नेक्स्ट मते कहि दियंतो which one of the following is not a greenhouse gas found naturally in the atmosphere कहा को हमें naturally atmosphere रे पाउ नाही मते की कहि दबो को गैस को हमें नेचुरली जदी देखुचे एमिति हैला एटमॉस्फेयर आपण माने पाइबे नाही दैट मींस आपण को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अछि माने कार्बन डाइऑक्साइड मिसी के अछि हमें पाइ जिबा इजीली होना नै कोटा पचारि छि नॉट ए पचारि छि दैट मींस हम रिलेट करबा नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज द प्योर नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें कहउचे दैट इज द प्योर
नाइट्रिक ऑक्साइड जोटा नाइट्रिक ऑक्साइड अदर नाइट्रोजन गैस हम कहि परबा दे डू नॉट ट्रैप इन द हीट जेते हीट को ट्रैप कोने व्हेयरएस नाइट्रस ऑक्साइड आपनकर कोन करछि ना पोटेंट एज अ ग्रीन हाउस गैस ताको आपन माने एलिमिनेट कर देबे क्लियर ग्रीन हाउस गैसेस आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द हीट and NO2 is not okay next mate कहंतु which one of the following correctly represents the relationship between the gross primary productivity and the net primary productivity जो माने मोर पेड क्लास करिसंती एएसओ रो पेड क्लास रे जॉइन हिसंती से माने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आराम से आंसर दे देबे जल्दी देखिबा जल्दी 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 देखिबा को माने आंसर दउचो जीपीपी एनपीपी कोन कहितली त मानकू कोन कहितली ना एनपीपी is equal to GPP minus respiration option B that means net primary productivity represent करूची जेतिकी remaining organic biomass रही गला after the plant subtract कला परे that means the energy they use for the कौन ना cellular respiration ପାଇଁ जेतिकी energy requirement हुए सेटा को energy टा plant absorb कला परे जेतिकी energy बढ़ी जाए सेटा होची clear एतिकी जिंस next चला अगेन कहूची गाइस ओपीएससी एसओ पई आपण मानकर बैच लॉन्च हे सारी छी मु आपण मानकर ईवीएस क्लास एटी कंप्लीट करूची सेशन आपनकर बहुत बढ़िया की चली छी आपण माने भी जॉइन करी जांतु जल्दी 1999 देकी अनुशासन बैच आफ्टर दैट यदि सहकारी बैच होचनी प्योरली फॉर द जूनियर असिस्टेंट 1199 ओनली पुलिस एसआई पई 399 देकी जॉइन करि परबे किछि क्वेरीज अछि को बैच जॉइन हेबा पई चाहुचंदी जॉइन हेचंदी किछि प्रॉब्लम फेस करूचंदी ताहाले आपण माने ऑफिस नंबर को कॉल करि परिबे एनीवे एक्सेप्ट द संडे नेक्स्ट मते कोंतु पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन पिन वैली नेशनल पार्क आपनकर कोठी अछि जल्दी हां जीपीपी रो डेप्रिशिएट हबो कोंदु मते नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियंतु ग्रॉस कहूची ना ग्रॉस हेले आपन मानकर टोटल सैलरी रु केते कोन खर्च करछंती ग्रॉस सैलरी होची माने कोन टोटल आपनकर इन हैंड यति की सैलरी पाउची इन हैंड नै आपनकर इन हैंड सैलरी तो अलग ग्रॉस सैलरी माने आपनकर टैक्स टैक्स कटि जाउची ता पूर्व आपनकर सैलरी टा ग्रॉस कहू तापर टैक्स कटला पर आपनकर नेट सैलरी आसी जाउची एनपीपी हे जाउची हला सो मते कहि दियंतु पिन वैली पचारि छ आपण मानकर आंध्र प्रदेश कहिले आपण माने पप्पीकोंडा जानि छथि आंध्र प्रदेश कहिले माने आपण माने पप्पीकोंडा को रिलेट करै पारिबे यस और नो अरुणाचल प्रदेश कहिले आपण माने रिलेट करै पारिबे कोन निमडापा आपनकर निमडापा को रिलेट करै पारिबे अरुणाचल प्रदेश सहित रिलेट हमें कहा सहित करबा मध्य प्रदेश कहिले आपण माने जानि छथि कहा को रिलेट करिवे मध्य प्रदेश कहिले कान्हा नेशनल पार्क आपनकर अछि किंतु जो हिमाचल प्रदेश अछि ता सहित आपण माने पिन नेशनल वैली को रिलेट करै पारिबे लोहल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट आपनकर प्रेजेंट अछि क्लियर नेक्स्ट मते कोंतु सो आंध्र प्रदेश हेले श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क पप्पीकोंडा को भी रिलेट करै परिबे अरुणाचल प्रदेश कहले नमडपा नेशनल पार्क मोलिंग नेशनल पार्क रिलेट करिबे हिमाचल प्रदेश रे आपनकर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क इंदरकिला नेशनल पार्क आपनकर खिरगंगा नेशनल पार्क आपनकर सिंबालबरा नेशनल पार्क नेक्स्ट मते कहि देंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस या भितरु कोटा आपनकर ग्रीन हाउस गैस नुहंती क्विक चंद्रशेखर क्लास भल लागुची ना फास्ट हे जाउची मते कहिबो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आसो नॉट ए ग्रीन हाउस गैस आपन को पचारि छी ता माने हम कहा को रिलेट करि परिबा कार्बन डाइऑक्साइड दरकिरा ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड ऑब्वियसली मीथेन भी ऑब्वियसली ताहाले द लाइटेस्ट गैस होची हीलियम हीलियम को हमें कौन कहूचे दिस इज द इनॉट नोबल गैस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन इनन को हमें कौन जानछि दिस आर द इनॉट गैस these are doesn't absorb the माने माने किछि एब्जॉर्ब करंतिनी या फिर आपनकर कोनोसी एमिट भी करंतिनी थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन जो माने थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करंती या फिर एमिट करंती हमें सेमान को कंसीडर करछे दिस आर द ग्रीन हाउस गैसेस क्लियर नेक्स्ट चलो तो मते कहि दियंतु ग्रीन हाउस गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर रे ग्रीन हाउस गैसेस कोडा अछि आपण माने जानि छथि किंतु हाईएस्ट अमाउंट रे आपनकर एटमॉस्फेयर रे कंटेन करूछि किए मते कहि परिबो around 80% very good carbon dioxide atmosphere रे around 80% रु अधिक आपनकर कंटेन करूछि द ग्रीन हाउस गैस कोन इमिशंस ग्लोबली नेक्स्ट मते कहि दियंतु सो रहउछि आपनकर की ना कार्बन डाइऑक्साइड 56.4% कहउछि किंतु अराउंड आपनकर ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो करूछि ना रफली 80% करूछि मेथेन आउ बाकी सब गैसेस आपण माने चेक करि पारिबे नेक्स्ट मते कहि दियंतु ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू ए जो ग्रीन मफलर आपण को कोन कहउछि हाँ एक्चुअली वाटर वेपर एग्जाम तापर हम कार्बन डाइऑक्साइड किंतु जेतो ऑप्शन में अछि आपण माने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलेट करेबे मते कहंतु ग्रीन मफलर दैट मींस आपण कोन कहउछि जल्दी सॉइल
pollution आपनकर chemical dumping हैला आपनकर heavy metals हला ए मानक पई soil pollution हेई थाए air pollution हेले आपण माने जानि संती muffler term त हमर यूज करा नाही muffler कम त हमर कोन यूज करा जाय कोथरे कहले noise सहित noise सहित रिलेट करि परिबा जोटा कि आपनकर कोन जो मफलर अच्छी दिस इज अ काइंड ऑफ हमें कहि परिबा हियरिंग डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर हमें कहि परिबा हियरिंग डिसऑर्डर एटा को आपण माने जदी अशोक गछ या फिर निंब गछ लगाउछंती ताहाले ता पाखरे जो आपनकर ऑक्सीजन ता बाहर सेटा आपनकर बहुत संख्या रे ए जो साउंड वेव्स आपनकर अधिक मात्रा रे सपोज आपण घर पाखरे बहुत परिमाण रे माने कोन गाड़ी मत जिबा आसीबा कहउछंती साउंड वेव माने नॉइज पोल्यूशन अधिक होउची आपण को सजेस्ट करबी घर पाखरे जदी निंब गछ लगाउछंती या फिर अशोक गछ लगाउछंती से बहुत साउंड वेव आपनकर एब्सॉर्ब करिवि यू कैन लाइक ट्राई करि पारिबे आपण हैला हां नेक्स्ट चलतु so green muffler or the and the noise pollution कहउची त ग्रीन muffler माने आपनकर कोन ना निंब गछ को नै कि आपनकर ग्रीन muffler को हम रिलेट करे फारिबा हैला नेक्स्ट मते कहि जंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोर डेंजरस ए जो अल्ट्रावायलेट रेज आपनकर अछि सबुटु माने खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज हम काहा को कहि परिबा कहलो देखि जल्दी को खतरनाक हमें कहा कहबे यूवीए को कहि परिबा एटा हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहि परिबा बट लोएस्ट एनर्जी यार वेवलेंथ लॉन्ग हो जाउची एनर्जी लोएस्ट हो जाउची हाईएस्ट एनर्जी कहार होबो ना जोटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होइतिबो ता माने यूवी सी को रिलेट करंतु समस्त आंसर देबे कागु ना यूवी सी को सी ना द डेंजर ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ जते शॉर्ट वेवलेंथ हेतिबो सेते अधिक डेंजर जते लॉन्ग वेवलेंथ हेतिबो तांकर पा कोन ना एनर्जी लेस हेतिबो तो लेस एनर्जी हेजिबो जदि हम ताके रिलेट करेबा हरे नै मदद को सो UVA हैला आपनकर लोएस्ट वन किंतु UVC हैला आपनकर हाईएस्ट डेंजरस कैटेगरी क्लियर एति कि जिंस क्लियर और नहीं मते को क्लास लाइक आपण मानन को इंटरेस्टिंग लागुची और यू आर फाइंडिंग इट बोरिंग और आई एम इंटरेस्टिंग आउटिके स्पीड ऑफ करिबा स्लो करिबा किछि गोटे को कोन कहउछ पाखा पाखी घंटाटे हे गलानी आपण मानकर केमति कोन क्लास लागुची मते टिके कहिलो ठीक अछि फ्लो ठीक अछि सब बुझा पड़ुची ना जो माने नॉन साइंस बैकग्राउंड रो पिला भी अछंती से माने को मुंडो ऊपर ऊपर जाउची ठीक अछि ओके डेफिनेटली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कह दियो ताले मते को ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आपन को कोथि पई हुई कहले मते देखि हां पिकन 1 आवर हे गलान 1 आवर हे गलान जणा पड़नी ना ओके चलो कौन कहूची द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू कौन कहि परिबा इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड ताहाले जदि हमर ग्लेशियर इंक्रीज हे जिवो ताहाले कोन हे जिवो जदि ग्लेशियर इंक्रीज हे जिवो ताहाले आपन को कोन हे जिवो जदि ग्लेशियल ग्रोथ आपन कर हबो ताहाले से रिफ्लेक्ट करिवो द आपन कर कूलिंग क्लाइमेट बट आमे कहि परिबा द इंक्रीज ऑफ द अर्थ रो आपन कर कोन जो अल्बेडो अछि जोटा कि आपन कर सनलाइट रिफ्लेक्ट करू सेटा अधिक मात्रा रे हबो कारण जते ऊपर को जिवो आपन कर ग्लेशियर कलर व्हाइट सनलाइट आपन कर फुनी माने केता स्ट्रक्चर ता कोन काच स्ट्रक्चर जे बेले पानी आपन कर सनलाइट पडियो से रिफ्लेक्ट पूरा जोरसोर रे करिवो ता माने पुनी हीटिंग बढ़ी चलिवो सो ये रीजन आपन कर कोन होची ना इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड आपन कर कोन जते बेले इंक्रीज हबो सेते बेले आपन कर ऑब्वियसली आपनकर सब जिंस बढ़िबो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़िबो हायर कंसंट्रेशन करिवो ट्रैप करिवो मोर आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को कहा सहित ना विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ रो एटमॉस्फेयर सहित क्लियर एति के जिंस पक्का चलो नेक्स्ट क्रिएट ब्लैंकेट यस मते कोंदु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ दिस कैन बी अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन या भीतर कोटा आपनकर सॉइल इरोजन रो रीजन हे परिबो की मते कहिबो फास्ट आपन को कहिची प्लॉइंग ऑफ द स्टीपली स्लोपिंग लैंड ए जो कहूची आपन को स्टीप स्लोप प्लॉइंग ऑफ स्टीप स्लोप्स कथा कहिची ता माने कोन ये एक्सेलरेट करिवो काहा को ना जति कि वाटर रन ऑफ चैनल्स माने अछंदी से मान को दैट मींस कोन करिवो ना ये या सते किछ रिलेशन हमरो नाही आसीबो कोन ना सबुटा सहित काहेंगे कारण पताची व्हिच ऑफ दिस कैन बी अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन कारण जबले स्लोपिंग लैंड कहूची आपन माने कर ये वाटर रन ऑफ हेजिबो तामाने आपनकर कोन करूची ना सॉइल इरोजन करिवो जेतेबेले
बेले ऊपर लेयर रु रन ऑफ हेकी आसुची वाटर सेते बेले आपनकर कोन न्यूट्रिएंट सहित सॉइल को भी रोज करके आनुछना नै म देखो टॉप सॉइल को आपनकर आनी दोछना नै भसै की आपनकर माटी उडा सब धोई के आनी दोछि आपनकर डिफोरेस्टेशन ऑब्वियसली रीजन हे जिवो कटिंग डाउन माने डिफोरेस्टेशन दीटा ऑप्शन हे गला माने ओवरग्रेजिंग भी तो ऑब्वियस ना हैला चलो नेक्स्ट माने कहि दियंतु oligotrophic lakes are characterized by ए जो oligotrophic lakes आपण माने सुनुचंती this is a characteristic ए जो oligotrophic कहार हबो मते की कहि परिबो heavy rain flooding strong wind definitely pick on एटा थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड हम टिके लॉजिक लगे कि टेक्निकल वर्ड यूज करबा ना हैला को मते कोन होची ए जो oligotrophic lakes कहि छी oligotrophics माने की कोन बुझुछ मते आगे कहिलो oligo means आपनकर लो ट्रॉफिक्स माने आपनकर लो इन द न्यूट्रिएंट्स ता माने कोन कहि परिबा ना दिस लेक्स हैव लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फीचर्स आपनकर कोन ना हाईली क्लियर हेकिबो ऑक्सीजन रिच वाटर हेकिबो ताको हम रिलेट करै परिबा क्लियर न्यूट्रिएंट्स लो हेकिबा दरकार पक्का चल ओलिगोट्रॉपिक माने आपनकर कोन हे गला ना लो न्यूट्रिएंट यूट्रोफिकेशन हे गले कोन न्यूट्रिएंट हाई हे गला सो ओलिगोट्रॉपिक इज द ऑपोजिट ऑफ द यूट्रोफिकेशन क्लियर देखो देन कहछि न्यूट्रिएंट लेवल वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आपनकर वाटर क्लैरिटी हाई ट्रांसपेरेंट रहइबो क्लियर वाटर रहइबो ड्यू टू द लो algal growth जदि algal growth बढ़ी गला यूट्रोफिकेशन हे गला बुझि परछो तो चलो नेक्स्ट कोन कहछि what kind of bacteria is used to measure the level of कोन कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडी कहले कोन कहूची जल्दी कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडी कहले तो मैंने कोन बुझुचो क्विकली आंसर दियो क्वेश्चन पचारुची इंडिकेटर द इंडिकेटर बैक्टीरिया फॉर वाटर कंटामिनेशन ता माने में को बैक्टीरिया को रिलेट करेबा सियानो बैक्टीरिया कहले हम जानछि कोन दिस इज द ब्लू ग्रीन algae cyanobacteria is nothing but the blue green algae हमें ताको रिलेट करछे जे आपनकर कोन ना इंडिकेट करिवो द न्यूट्रिएंट आपनकर लोड अछि ना नाही रादर दान हमें कहि परिबा स्पेसिफिक कोन ना जति के आपनकर कंटामिनेशन अछि जति के आपनकर फिकल सॉरी दैट अरे यार पार्टी लागिलानी आजकल हो जति के आपनकर फिकल कंटामिनेशन अछि ओके सो इक्वली त आपनकर बिल्कुल हबनी एटा आपनकर कोन दिस इज अगेन ए फेकल बैक्टीरिया माने स्पेसिफिक स्पेसिस फॉर द फेकल बैक्टीरिया आपनकर जो कोलिफोरा बैक्टीरिया अछि कोन कोलिफोरा बैक्टीरिया दिस इज द एंटायर आपनकर कोन बैक्टीरियल ग्रुप कथा बुझौची जते बेले सॉर्ट होची से माने कोन ना सैनिटरी मैट्रिक ओके तो राइट आंसर आपनकर कोन हे गला ना कोलिफॉर्म बैक्टीरिया दिस इज द काइंड ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडी एतिकी जिंसा क्लियर आपन मानकर देखि दियो सो आपनकर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स टू assess the sanitary quality of water माने वाटर रा क्वालिटी केतिकी प्योर अछि वाटर रा क्वालिटी केतिकी प्योर अछि सेथिरे आपनकर डिफरेंट बैक्टीरियल केतिकी फॉर्म हेसंदी एटा को आपनकर की डिफाइन करिवो ना ए जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आपनकर डिफाइन करिवो हैला नेक्स्ट मते कोन द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द कीटो प्रोटोकॉल इज कीटो प्रोटोकॉल रा प्राइमरी एजेंडा कोन होबो मते को so the primary agenda of the keto protocol is कौन है राइट आंसर कीटो प्रोटोकॉल कहिथिले आपण माने को कहिथिली ऑलरेडी देखिया डिस्कस करो रेगुलेशन ऑफ द hazardous waste कहले त माने को कोन कहिथिली काहा साथ रिलेट करिवो hazardous waste माने ह्यूमन साथ रिलेटेड ता माने आपको आपण माने कोन कहिथिली vessel सहित रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी कहले आपण माने कोठी पाइबे क्विक न्यूक्लियर एनर्जी कहले आपण माने कोठी पाइबे द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सहित पाइबे कंट्रोल द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस या सहित रिलेट करबे 1990 नॉन ऑफ द एबव मानिबे नै हैला चल 1997 रहितला 1992 अच्छा सॉरी 1992 रे द कीटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एक्सटेंड्स इन 1992 यूनाइटेड नेशंस टीमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज ओके कहां पर ग्रीन हाउस गैसेस को लेके मते को व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द 3R प्रिंसिपल ए जो 3R आपण माने केबे सुनि चंती द कांसेप्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रेडिट फास्ट ओरिजिनेटेड इन द कीटो आज्ञा एसकेआर बाबू मते कोन ए जो 3R कहूची ता माने कोन आपण करो दैट मींस आपण का रिसाइकल रीयूज रिड्यूस या फिर आपण का फास्ट रिड्यूस करो तापर रीयूज करो तापर बोइला ताको रिसाइकल करो कोटा हबो आपण करो कोटा हबो फास्ट हमें ट्राई करिया केते के रिड्यूस करि परिबा जोरा बोलिला ताको हमें ट्राई करिया रीयूज करि परिबा रीयूज न हैला कोन रिसाइकल करिया तीनटा मेथड
conceptually माने conceptually जाई कि बुझिबो फास्ट तार हायरार्की अनुसार मन रखिबो प्रायोरिटीज अनुसार मन रखिबो तो रिड्यूस करिवो तापर रियूज करिवो नहेले रिसाइकल करिवो ओके नेक्स्ट मते कोंतु इन व्हिच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड को ईयर आपनकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हेतिला कि मते कहि परिबो क्विक को ईयर रे आपनकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हेतिला छुआ को ईयर हेतिला 89 रे 89 रे काई 1980 रे हेइनु सीधा 89 ऑप्शन अछि कि ना मत माने 80 लिखिछ मते 89 देखा जाउची अच्छा 80 लिखिछ कि हो द क्रुशियल इंडियन एक्ट वाज एनेक्टेड टू चेक द आपनकर कोन इनडिस्क्रिमिनेशन हमें कहि परिबा डिफॉरेस्टेशन ऑफ द नॉन फॉरेस्ट सोर्सेस जा भी रहिला ताकि 1980 रे हेतिला while the act was originally enacted in 1980 the control deforestation हेतिला 1988 रे हैला नेक्स्ट मते कहि दियंतु वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपनकर सेलिब्रेट करा वाला फर्स्ट टाइम पई दा माने सेही गोटिए तारीख 5 जून रे किंतु पछरे जे को मसिहा रे किए कहिबो कोडी ना तारा मीन्स कोन थिला थीम फर्स्ट अपन 1973 5th ऑफ जून ने सेलिब्रेट करा जाई थिला एनवायरनमेंट डे को माने रखंतु तारा फर्स्ट माने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रे ही हेतिला माने रखंतु तार थीम कोन थिला ना ओनली वन अर्थ एटा थिला द थीम ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट डे क्लियर एति की जिंस चला नेक्स्ट मते को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गला 1972 रे अपन करितला स्टॉकहोम कन्वेंशन ने 5th जून 1973 इज करेक्ट मते को व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट रे इंडिया अपन कर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केबे पास करथला की कहबो जल्दी अरे यार मते कहलो नाक कुंडे हेले कोन मिले परफ्यूम गिफ्ट मिले कि हाथ फात कुंडे हेले पैसा मिले सेमती नाक कुंडे हेले कोनटा मिलुथबो ना आंसर सुनना मुदे मिलियो नाक कुंडे हेले किए दबरे खास लोक के नांदी देबा लागे बिरयानी आखी नाई नाक नाक त्रिविक्रम नाक हवास सो पता जी when did the government of India pass करथिला आपनकर obviously 1986 रे थिला इंडियन पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल केते हितला रे आर्टिकल अंडर रे केते नंबर आर्टिकल अंडर रे गदस्तन टिके कहि दियो प्लीज आर्टिकल 253 हैला नाक कुंडे हुई निगरे तम माने कर केबे अच्छा so the Environment Protection Act 1986 it was under article 253 of the constitution to provide for the protection and improvement of the environment trigger kon apanakar heitila the legislation was promptly by the Bhopal gas tragedy 1984 re hela pore apanakar asthila hela next mate kahi diyantu as for the Wildlife Protection Act 1972 as for the Wildlife Protection Act 1972 no alteration in the boundaries of a tiger reserve shall be made except one recommendation of the National Tiger Conservation Authority of and the approval of which of the following bodies ताहले जो National Tiger Reserve हमर हैला ओके ताहले मते कुहंतु अप्रूवल कहार दरकार एनवीडब्ल्यूएल जो माने एप्लीकेशन क्लास रे को माने एप्लीकेशन छुआ छ देखि केई बोदे नांती एप्लीकेशन छुआ बोदे के म देखा जाउना दूर दूर तक मोदक अच्छा कि अमित मोदक ओके देखो तो एनवीडब्ल्यूएल को तुमको लास्ट क्लास रे पढाइतिली ये सब कोर्स कोन दिस इज द अपेक्स एडवाइजरी बॉडी advisory body means overall आपनकर कोन करबा ना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस आपनको प्रोवाइड करबा rather than the technical जति कि प्लानिंग अप्रूवल से दिए किंतु ताको कोन अपेक्स एडवाइजरी बॉडी भाबरे हम एनबीडब्ल्यूएल को नोचे किंतु एडी जो एनटीसीए अछि कोन ना एनटीसीए और आपनकर नेशनल टाइगर रिजर्व आपनकर यूनियन कैबिनेट कहितली सेंटर आपनकर फॉर्म करबो तापर आपनकर एनबीडब्ल्यूएल कोन करबो ना ताको एडवाइस करबो कि whether you are going right or going wrong
ओके बाकी द कंजर्वेशन आपनकर कहा द्वारा हबो ना एनटीसीए रो द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट अंडर आसीबो एतिके जिंसा क्लियर एठी आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अंडर रे कोन आसीबो ना आपन डब्ल्यूसीसीबी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपनकर फोकस करिवो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हैला आपनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोन करिवो सीजेडए को देखि दोछि सब त जानि था डब्ल्यूसीसीए को एठी आपनकर सीजेडए क्लियर ए कोन के बी ना बी बोर्ड ब्यूरो ब्यूरो है ना सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होची डब्ल्यूसीसीबी सीजेडए आपनकर होची सेंट्रल जू अथॉरिटी जोटा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ताकू ऑथराइज करूची क्लियर एतिके जिंस क्लियर 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 राइट आंसर आपनकर कोन हेजिबो यूनियन ना 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 टिके रो एडा ना कारण 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 यूनियन कैबिनेट पाखरे एटी क्वेश्चन आपन को सेटा पछन टिके रो पता जी एज पर द वाइल्ड लाइफ गोटे मिनिट एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नो अल्टरेशन इन द बाउंड्रीज सॉरी एटी नो अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज पछन छि ता माने एटा एडवाइजरी बॉडी आसीला एडवाइजरी बॉडी आसीला माने आपनकर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एटा एनबीडब्ल्यूएल अंडर को पळे आसीबो ना 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 एनबीडब्ल्यूएल अंडर को हां 2003 अंडर ईएसएस के एनबीडब्ल्यूएल अंडर को पळे आसीबो कारण एटा एडवाइस कंडीशन जदी फॉर्म करबा कंडीशन आसीला ताहाले यूनियन कैबिनेट को पळे आसीबो जदी फॉर्मिंग करबा कथा आसीला ताहाले यूनियन कैबिनेट को पळे आसीबो एनबीडब्ल्यूएल आपनकर करिवो कोन ना जेति कि आपनकर लैंड बाउंड्री सपोज नेशनल पार्क हमर अछि एठी भीतर कनिकार एरिया एतिक अछि हमें जानला को एक्सटेंड करिया पे हमें जानला को शॉर्टन करबा लागि ताहाले एठी आपनकर परमिशन रिक्वायर हबो कार ना एनबीडब्ल्यू ठीक अछि ना 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 एठी आपनकर एनबीडब्ल्यूएल मु परमिट एठी आपनकर बाउंड्री टा लंबा क्वेश्चन टा ना मु ताको देखि नथली कि बाउंड्री कथा खाली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखि कि यूनियन कैबिनेट को रिलेट कर दी ठीक अछि वेट टिकट क्रॉस चेक कर देबी यस ठीक अछि आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हबो एनबीडब्ल्यूएल ही हबो ओके हां चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो अरे ओके एबे को एटा कहि दियो नेशनल वाइल्ड लाइफ आपनकर एठी अछि क्वेश्चन टा मते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए क्वेश्चन टा को देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज मैंडेटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू अकॉर्ड द अप्रूवल टू द टाइगर कंजर्वेशन प्लान कोन हबो जल्दी को एनटीसी 2005 रे हितला कि मैम यस आपनकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 रे ऑर्गेनाइज हितला एस्टैब्लिश हितला यार आंसर दियो पूरा बस हो आंसर छियो हुए केबे केबे फ्लो रे हेइ से आंसर दियो यार मते को कोन हबो राइट आंसर यार एठी एनबीडब्ल्यूएल पळैला कारण एठी पुणी पचारि छि क्वेश्चन एठी देखो टू अकॉर्ड अप्रूवल टू द टाइगर कंजर्वेशन प्लान टाइगर कंजर्वेशन प्लान रो अप्रूवल कथा एठी पचारि छि ताहाले एठी हम का को रिलेट करबा ना एनटीसीए को रिलेट करैबा का को ना एनटीसीए आपनकर 2005 रे अप्रूवल हेतिला एटा को मन रखिबे क्लियर एते कि जिंस देखो सो एनटीसीए आपनकर 2005 रे सॉरी 2006 रे हेतिला 2005 रे हेतिला एटा बोल से देछि 2006 रे नै 5 रे हेतिला आमेंड हेतिला आपनकर 2005 रे एनटीसीए डिसेंबर मास रे so national tiger conservation authority is a statutory body under the ministry of environment forest and climate change constituted under the wildlife protection act 1972 as amended in 2005 रे not c रे जो 6 रे 9 december 2005 रे हितला मते कोन तो public liability insurance act हाँ मते कोन तो public liability insurance act 1991 was enacted by the Indian parliament to provide immediate relief to persons affected by accidental occurring while handling कोन पछाछि आपन को ना कोनोसी एक्सीडेंट रे और आपनकर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जोटा कहूची कोनोसी माने एक्सीडेंटली जल तांकर किछि प्रॉब्लम आसे ताहाले आपनकर कोन 1991 एक्ट आपनकर मैंडेट करूची इमीडिएट रिलीफ ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जीवो फॉर द विक्टिम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रियल कोन जेति कि आपनकर एक्सीडेंट्स रहि जेमिति आपनकर हेतिला मने पडुछ तो भोपाल गैस ट्रेजेडी तांको फैमिली समस्त मिलला बट स्टिल दिस इज नॉट अ माने
कौन कहि परिबा दिस इज नॉट अ रिकवरी बट what helping amount of chalo so the Public Liability Insurance Act 1991 according that was enacted by the Indian Parliament to provide immediate relief to persons other than workmen affected by the accident occurring while handling the hazardous substances सेटा आपनकर ऑलरेडी जेतेबेले एग्रीमेंट करथियो सेतरे मेंशन हेकी थिबो मते कहि दियंतु द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन अल्टरनेशन ट्रीट आपनकर ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट कोन हबो जल्दी आंसर दियो 42 क्वेश्चन बुझा पड़लानी जीबी आउ थरे 42 क्वेश्चन जीबी आउ थरे आस कहछि द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 was enacted by the Indian Parliament to provide immediate relief माने पब्लिक आपनकर कोन इंश्योरेंस एक्ट आपनकर 1991 enacted हेछि को केस रे आपनको एंड केते बेले मिलिबो ना जेते बेले आपन कोनोसी गोटे एम्प्लॉय केमिकल फैक्ट्री रे काम करूछि केमिकल फैक्ट्री रे समाने जॉइन हेछंती एंड तांकर कोनोसी गोटे माने एक्सीडेंटली तांकर किछि प्रॉब्लम होउछि सपोज एसिड फिसिड हाथ रे पड़ी जाउछि एक्सीडेंटल कोन मेसिन आगे गोड़ हाथ चापी ही जाउछि से जगह रे आपनको इंश्योरेंस क्लेम करिया को पड़ियो सारा गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करिवो कंपनी इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करिवो ता सहित गवर्नमेंट इंश्योरेंस करिवो एंड जेते बेले कोनोसी कंपनी सेमिति केमिकल कंपनी आपनकर केमिकल फर्टिलाइजर्स हैला या फिर केमिकल कंपनी आपनकर गवर्नमेंट अंडर एटा साइन करे कंपनी करिवे लागि जेते सब एम्प्लॉयज मानकु से हायर करे से एग्रीमेंट सहित हायर करे गवर्नमेंट तो ताको इंश्योरेंस प्रोवाइड करिवो ता सहित कंपनी भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करिवो सेटा आपनकर हाजार्डस सब्सटेंस अंडर रे छिप एति की बुझी पाला स्केयर के पचातला चंद्रशेखर ना स्केयर ओके चल नेक्स्ट मते कुआ now the Montreal Protocol is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances it specifically target ये कहा को टारगेट करिवो मॉन्ट्रियल 1989 रे हेथिला 2019 रे अमेंडमेंट हेथिला ओके मते कहि दियंतु ये कहा को करिवो ओजोन को करिवो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को आपनकर करिवो कोन नै मते कोंदु यस और नो यदि आपनको कीटो पचारि थांता ताहाले हमें रिलेट करता ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को पीओपीएस कहला माने आपण माने रिलेट करि परिबे कोन ना आपनकर स्टॉकहोम पीओपी कहला आपण माने स्टॉकहोम्स को रिलेट करेबे हैला चलो नेक्स्ट मते hazardous सिलेक्शन हैला माने आपण माने जानि सुन दियो बासल लो चलो मते कहि दियंतु द रामसर कन्वेंशन साइंड इन 1971 गाइस ठीक है धीरे कहबी की हां कोन मते द रामसर कन्वेंशन साइंड इन 1971 provides the framework for national action and international cooperation for the conservation and wise use of कहार वाइज यूज रहिबा दरकार जेते बेले आपन को रामसर कहूची आखी काना बंद करी के सब वेटलैंड को पळे आसी आखी काना बंद करी के आपन माने जदी मराइन एनिमल्स कहूची आपन मान को साइट्स कथा कहितिली फुल फॉर्म सहित साइट्स कहि दिले मराइन मैमल्स मान को आपन माने साइट्स से रिलेट करिवे आराइड एंड सेमी आराइड मान को आपन माने कहा से रिलेट करिवे ना यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैट कोन ना डेजर्टिफिकेशन एटा आपन कर यूएनसीसीडी अंडर रे पळे आसीबो आराइड एंड सेमी आराइड लैंड्स मान को हैला मरुभूमि वाला high altitude grasslands कोथरे सीबीडी रे पळे आछि दैट मींस कोन द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो एटा आपनकर सीबीडी अंडर रे पळे आछि हाई अल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स कोन एति जिंस क्लियर नेक्स्ट चलो व्हाट इज द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट कॉल्ड कोन हबो मते की कहबो जल्दी हां बापी जो कोन बी पटनायक बीआई पटनायक बी माने कोन आसो तो मते कोन कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट कहले आपण माने कोन बुझबी इन सितु कंजर्वेशन एक्स सितु कंजर्वेशन जेते बेले आपण को कहूची कोन ना कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन द नेचुरल हैबिटेट एटा इन वर्ड लागिसी इन सितु जेते आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट हे जिवो एक्स सितु दुईटा डिफरेंस बुझ पारलो इन सितु कहूची माने कोन ना प्रोटेक्ट करिवो द वाइल्ड स्पीशीज मानु को डायरेक्टली inside their natural ecosystem तांको को जगह रे बंधन करके रखा जीवन ता माने यार एग्जांपल आपण माने कोन दे देबे नेचुरल पार्क्स सॉरी हां आपण कोन हिजिबो नेशनल पार्क्स ओके कोन हिजिबो
ना नेशनल पार्क्स डीएनए हैला सीड्स इन हैला बैंक सेतु हैला एई सब को आपण माने कोन ना जूस आपण नंदनकानन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक सेतु जो दे आपण नेचुरल हैबिटेट्स को सॉर्ट करके तांको क्राइटेरिया करके रखसन नेचुरल हैबिटेट कोन सेटा की नेशनल पार्क आपण मान जाउ ना देखिबे केते सारा आपण कोन घोड़ा हाथी सब घोड़ा तो नाही हमर ओडिसा रे बट हाथी बाघ सब खोला खोल बुलु संदी से माने आपण कोथि की जिवे ना से माने इन सेतु रे जिवे तळे तांको बंदी करके रखि दोचे तांका नेचुरल हैबिटेट भितरु बाहर करके छोटो जगह रखुचे सेटा को हम एक सेतु को बुझे देबा एतिक जिंसा क्लियर ऑफ सेतु हेले एंति किछ वर्ड ही नाही आपण मानु खाली कंफ्यूज करबा लागि इन एक्स ऑफ लिख दिछि नेक्स्ट मते कोंदु फॉर व्हाट रीजन वाज द चिपको मूवमेंट लॉन्च चिपको मूवमेंट आपण कर उत्तराखंड कोंदु मते राइट आंसर कोन हबो चिपको मूवमेंट आपण कर लॉन्च हेथिला केबे क्विकली आंसर दे दियो जल्दी जल्दी ऑब्वियसली आपण कर उत्तराखंड रे कोन करथिले ना फॉरेस्ट करिबा को प्रोटेक्शन करथिले काहा को ना कटिंग द ट्रीज protected from cutting the trees 1970s रे अपन उत्तराखंड रे हेतिला तो चिपको मूवमेंट मीनिंग टू हग और टू क्लीन दैट मींस लेडीज माने वुमेन माने कोन ना गच्छ को न काट माने काटी बेनी बोली कोन ना एंती कवर करके ताको रखिथिले दिस इज द पिक्चर ओके एंड प्रिवेंट द फास्ट डिफोरेस्टेशन ताको लीड के करूथिले ना गौरा देवी ताको लीड करूथिले ओके नेक्स्ट मते चला कोंदु व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द लोटिक वाटर ए जो लोटिक वाटर ता माने कोन की कहबो हां सुंदर लाल आपनकर मध्य थिले ये चंदेरी प्रसाद भट्ट गौरा देवी लेडीज मान को भीतर गौरा देवी को मन रखिबो मते कोंदु एग्जांपल ऑफ द लोटिक वाटर से भीतर कोटा लोटिक माने आपनकर कोन दे कहले लोटिक कोटे लेंटिक कोटे हैला दीटा आपन माने मन रखिबे लोटिक माने कोन लोटिक माने आपण को जति वाटर स्टोर हे के रहउछ वाटर स्टोर हे के रहउछ सेटा हमर लोटिक आ जति लेंटिक कहिला ता माने आपण को कोन ना वाटर जते फ्लो कंडीशन रे रहउछ माने सेटा आपण को जाई के ओशन सहित मिस जाउची माने रिवर हैला लेक हैला पॉन्ड हैला या फिर बाहर आपण को कोन आपण को लेंटिक हैला माने हां लेंटिक हैला माने आपण को कोन हे जीवो लेंटिक माने आपण को क्लासिफाइड हे जीवो रिवर आपण को लेक्स पॉन्ड या सहित आपण माने रिलेट करि परिबे स्टिल और स्टैंडिंग कंडीशन रे वाटर बॉडीज आपण को रहिबो किंतु स्टील हैला रिवर हैला स्प्रिंग हैला तो रिवर एक्चुअली भूल लिखि छी लेक एंड पॉन्ड हेबा कथा एठी रिवर ता मिस्टेक रे लिखि छी रिवर आपण को हबो नाही रिवर ता आपण को एथिरे पळेबो लोटिक रे पळेबो हां रिवर ता आपण को लोटिक रे पळेबो माने एटा आपण को कोथरे स्टोर हेबा कंडीशन रे उप सॉरी वाटर स्टोर हे के रुहेन एटा आपनकर वाटर फ्लो उल्टा कहि देले उल्टा कहि देले रे स्टोर हे के रहिले ताको हमें कहउचे दैट इज द लेंटिक वन बट एटा लेक एंड पॉन्ड आ जदी लोटिक कहउचे एटा आपनकर वाटर कोन फ्लोइंग कंडीशन रहइबो एटा आपनकर वाटर फ्लो रहइबो एटा के स्ट्रीम रिवर एंड स्प्रिंग्स एउडा कहइबो बी एंड डी हबो ना बी एंड डी लेक्स एंड पॉन्ड्स लेक्स एंड पॉन्ड्स ना एटा आपनकर नाही एटा एक्चुअली आपनकर कोन हबो लेंटिक हबो एटा लोटिक नाही लोटिक माने आपनकर जोटा फ्लोइंग कंडीशन हे जीवो स्वैम्प्स एंड लेक्स ता सहित रिलेट करेबानी किंतु स्ट्रीम्स रिवर एंड स्प्रिंग को रिलेट करिया ए तीनटा जका आपनकर गोटे कैटेगराइज आपनको देखा जाउथुवा कारण एठी भी लेक अछि एठी लेक अछि एठी आपनकर लेक अछि किंतु एठी आपनकर लेक नाही या अकॉर्डिंगली आपन माने ऑर्डर आउट कर परिबे हैला ठीक अछि हां स्केयर जाओ चलो सो लोटिक स्ट्रीम हे गला आपनकर रनिंग वाटर एक्वाटिक हे गला आपनकर लेंटिक एतिकी जिंस बुझिबार अछि नेक्स्ट मते कहि दियंतु who coined the term biodiversity hotspot आपनकर ए टर्म को के कॉइन करथिले ऑल ऑफ द अबव खबर न दीपू ऑल ऑफ द अबव खबर नाइटी तीनटा जका आपनकर गोटे क्राइटेरिया रे अछि गोटे आपनकर एलिमिनेशन अछि कारण एथिरे स्ट्रीम रिवर और स्प्रिंग अछि आपन माने रिवर और स्ट्रीम को अलग कोठी देखिबेनी ना कि आपनकर कोन स्ट्रीम रिवर एंड स्प्रिंग को कोठी देखिबेनी whereas लेक आपनकर सब जगह अछि तीनटा जका आपनकर हेजिबे लेंटिक रे गोटे आपनकर लोटिक रे देखो who coined the term biodiversity hotspot आपनकर की कॉइन करथिले जदि हमें हेकल को रिलेट करबा ऑलरेडी मु तमन को कहि छि ये आपनकर इकोलॉजी टर्म यूज करथिले ये आपनकर कोन ओरिजिनली कॉइन द बोर्ड पैटर्न टर्म ऑफ द इकोलॉजी 1866 रे इकोलॉजी कहिले आपण माने रिलेट करेबे का हेकल को सहित कहि छि देन आपण माने रिलेट करेबे का सहित एठी नै ग्लोबल वार्मिंग जदि आपण को पता गले टर्म की कहिसंती ग्लोबल वार्मिंग सहित एंकु रिलेट करेबे ग्लोबल वार्मिंग सहित
हैला देन नॉर्मल मायर्स को रिलेट करेबा की ऑप्शन सी प्रणाम लिसा नॉर्मन मायर्स को रिलेट करे परिबा कि द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस करथिले 1988 रे नॉर्मन मायर्स हेनरी बुइसन आपन फिजिसिस्ट थिले से कोन डिस्कवर करथिले आपन मने पडुनी आपन हैला चल ओजोन लेयर पर ये करथिले हेनरी हैला नेक्स्ट चल 1913 रे मते कहंदु अगेन who gave the 10% law for energy transfer in food chain ये करथिले देखि तो सारी बने आंसर चीटिंग करिया को मास्टर त माने हो 10% लॉ जेते बेले हमें जाउची गोटे पिरामिड शेप रे ऑलवेज आपनकर कोन एटा हबो ना 10% लॉ अकॉर्डिंग आपनकर एनर्जी लॉस हुई 1000 हेतिले 100 हबो 100 हेतिले 10 हबो सो मते कोन याको फर्स्ट प्रपोज के करथिले लैंडमैन के करथिले इंट्रोड्यूस करथिले ट्रॉफिक एफिशिएंसी आपनकर कोउथरे ना ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल स्ट्रेटजी 10% इकोलॉजिकल एनर्जी मूव्स अप टू द कोन नेक्स्ट लेवल देखि दियौ जेते बेले हमें एठी कोन अछि 1 लाख टू 10000 10000 110 तो प्रति स्टेप रे आपनकर 10% एनर्जी लॉस हे जाउछ क्लियर नेक्स्ट मते कोंतु which of the following terms denotes the increase in concentration of the toxicant at successive trophic level कोन कहिबा एबे राइट आंसर को जल्दी which of the following terms denotes the increase in concentration of the toxicant at successive trophic level कोन हबो क्विक पानी फंडी पीबे रे पड़ी जिमी हल तळे तमाने सब खाई पी के आछो तमाने कोन अछि मोबाइल धरि के इडली दुकान पळेबो तो राइट आंसर कोन हे जिबा आपन करो बायोडिग्रेडेशन हबनी biodegradation this is a natural breakdown process this is a total breakdown process okay इकोलॉजिकल सक्सेशन ये भी आपन कर हबनी बिकॉज़ हमें जान चाहिए गोटे प्रेडिक्टेबल और हमें कहि परबा ग्रेजुअल प्रोसेस बाय व्हिच हमें कहि परबा इकोसिस्टम आपन कर चेंज हुए और डेवलप हुए आपन कर ओवर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम किंतु जदि हमें कहिबा बायो मैग्निफिकेशन याको हमें कहि परबा दिस इज द प्रोसेस वेयर कोन पर्सिस्टेंट टॉक्सिन्स लाइक आपन कर हेवी मेटल्स इंक्रीज करंती कंसंट्रेशन ऑफ द फूड चेन पर्यंत हन नहीं चलो सो राइट आंसर आपनकर बायो मैग्निफिकेशन नेक्स्ट मते कहि दियंतु अरे बा अगेन कहूची गाइस ओपीएससी एसओ पाई बैच आपनकर 1999 ने अनुशासन स्टार्ट हे सारलेनी क्लास ऑलरेडी ईवीएस क्लास आपनकर स्टार्ट हेची ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन पर्सन को माने ईवीएस रो बहुत सारा नै क्लाइमेट चेंज ए सब तो कवर अप हे गलानी सहकारी बैच जूनियर असिस्टेंट पाई 1199 ने जॉइन करि परिबे अग्निपथ 399 ने पुलिस एसआई पाई जॉइन करि परिबे आउट ऑफ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी अशोक बाबू चिकेन अबे तुम कोन बी पटनायक सकाळ सकाळ तुम चिकेन कसा खाई सरलानी पेट नाटा कोन आसो मते को व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड केबे हेतिला प्रोजेक्ट टाइगर केबे हेतिला प्राइम मिनिस्टर किए थिले इंदिरा गांधी थिले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थिले कोठी हेतिला ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ईयर 1973 पक्का डन 1973 रे हला कोथि पई हेतिला ना सेफगार्ड प्रोवाइड करिवा लागि बेंगल टाइगर मनकर पॉपुलेशन जेतु आपनकर डिक्लाइन होछ हला नेक्स्ट देखो सो प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे आपनकर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कैलाश संखला ये थिले फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर रो डायरेक्टर and as the Bengal tiger is the national animal of India etc next mate ko the environmental coordinate score EKC okay sorry EKC okay fine see कोन कहछि ना द एनवायरनमेंट कॉजिंग स्कोर कहा को हमें कहिबा दैट मींस आपन को कोन कहछि ना shows the relations between per capita GDP or the environment loss what is the shape of the environment causing score यार shape सब बेले केमथि हो जान छथि जान नथि मे बी एटा U shape रे हो सब बेले U shape रे हो inverted I shape सब आपन कर नॉन एक्जिस्टेंट बेले आपन कर shape नाही U shape रे काहे कि हम मु बुझौछि देखो so the environment coordinate score आपन कर U shape रे हबो काहे कि in early stage of growth आपन कर as per the capital income
जीडीपी इंक्रीज होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन धीरे धीरे आपनकर इंक्रीज होता है तापर पुनी डिक्रीज है कि पूर्ण थोड़ा आपनकर इंक्रीज होता है दैट मींस ये जो शेप टा क्रिएट हो जाए सेटा आपनकर कोन यू शेप रे हुए आपनकर कोन अर्ली स्टेज रे ग्रोथ हुए तापर टर्निंग पॉइंट आसे कोन तळु को पुनी लेवल लो हो जाए पुनी आपनकर लेटेस्ट स्टेज रे ग्रोथ आसे सो इथे आपनकर सेटिमेट यू शेप बोली वर्णना कराଯାଇଛି चलो नेक्स्ट the actual location or place where an organism lives is called jete bele gote particular location ne gote organisms kono गोटे पर्टिकुलर लोकेशन ने गोटे ऑर्गेनिजम्स रहे ताको हमें कोन कहूचे दैट इज डेफिनेटली हमें कहूचे हैबिट रो हैबिटेट सुनी थी आपण माने ना कोन अरे केमती इकोसिस्टम हबो जे कोन पचारि छी द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव जोठ हमें बंचुचे कोड कहूचे मनुष्यर घर तो गोटे हैबिट रो हैबिटेट होथुओ इकोसिस्टम सहित एटा स्ट्रक्चरल सिस्टम आपनकर होइला जोथरे आपनकर वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहउसंती कोन डिफरेंट कम्युनिटी रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहउसंती हमें डेफिनेशन कहबा दिस इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम जोथरे कंप्राइजिंग करसंती बोथ द लिविंग कम्युनिटीज एंड द नॉन लिविंग आल्सो कारण ते आपनकर एनिमल्स माने रहउसंती एंड प्लांट्स माने रहउसंती सेते बेले हमें ताको इकोसिस्टम कहबा जेतेबेले लिविंग टुगेदर बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक अ यूनिट हमें ताको कहबा इंटरैक्टिंग टुगेदर एज अ यूनिट हमें ताको रिलेट करबा दैट इज द इकोसिस्टम बट हियर द हैबिट रो हैबिटेट हैला हैबिट रो कोन हैबिटेट दिस इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया कंसीडर करि परिबा वेयर स्पेसीज नेचुरली लिव इनसाइड हैला नीचे हां नीचे कहले आपण माने कोन बुझिबे ना फंक्शन द रोल द बिहेवियर and the position of an organism suitable occupy करे within its community rather than just its location ताको हमें कहबा नीचे त प्रॉपर निजर कम्युनिटी को से बिहेव करे सेटा को हमें कहू नीचे द बायोम कहले हमें कोन बुझी परिबा ना द रीजनल और द ग्लोबल बायोटिक कम्युनिटी हमें कहि परिबा डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न्स को नै कि आपनकर वेजिटेट आपनकर कोन वेजिटेशन टाइप को नै कि आपनकर बायोम ता चेंज होता क्लियर चलो मते कोन व्हाट इज हैबिटेट हैबिटेट refers to the natural environment where organisms or a group of organisms live and rise clear next chalo mate ko which one of the following is the largest ecosystem of the largest ecosystem world ro kota hab ko acha jara विपथ नायक मु द बी पटनायक पढुछि सते मते से एच टा देखा जाउनी ओके बाय देखो सब पिला को पचार समस्त कोन पढिथिबे को मते व्हिच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन वर्ल्ड लार्जेस्ट कोन कहितली माने टोटल आपनकर जदी टोटल आपनकर एति के आपनकर कोन हैला ना ओशन हैला आउ एति के आपनकर कोन हैगला ना लैंड हैगला लैंड हैला सबटु लीस्ट एंड ओशन हैला आपनकर सबटु कोन लार्जेस्ट माने ओशन केते हबो ना 71% यदि मराइन इकोसिस्टम हम देखुचे कवर roughly 71% of the earth surface and hold the vast majority of its water next मते कहि दियंतु सो कवरेज कोचे 71% नेक्स्ट सबटु लिस्ट कहिला आपण माने क्रॉपलैंड को रिलेट करेबे हैला क्रॉपलैंड और द कोस्टल ब्लू कार्बन अंटार्कटिका एवडा को रिलेट करिवे मते कहू व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ आर्थ क्लाउड्स एंड वेयर वेदर ऑकर्स वेदर आपनकर चेंज हुए को लेयर रे के मते कहबो क्विक को most of the cloud and the weather phenomena occur in the जदि हमें जे स्ट्रेटोस्फीयर को कोठी ना ओजोन लेयर ताहाले हमरो एटमॉस्फेयर सहित अर्थ सहित कनेक्टेड को लेयर सेठी हमें देखिबा ऑलमोस्ट हमें कहि परबा 75% ऑफ एटमॉस्फेयर कोड रहउची एटमॉस्फेयर मास ऑलमोस्ट ऑफ वाटर वेपर एवरीथिंग हैज बीन प्रेजेंट इनसाइड द ट्रोपोस्फियर हैला नेक्स्ट देखो मते कोंदु वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी लोकेटेड हेडक्वार्टर आपनकर यूएनईपी रा कोठी अछि रेणुलता तमे एते जल्दी क्लास पर आसीथिबार मु धन्य होई गली दियो आंसर दियो केनिया राइट आंसर आपनकर कोन केनिया होची पक्का ता सहित जीबा जीबा केनिया सहित जीबा ए जो नाइरोबी अछि
एटा आपनकर यूनाइटेड नेशंस कोडी ना केनिया होउची तार कैपिटल केनिया रा कैपिटल आपनकर कोन होउची नाइरोबी सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज बीन एंकर्ड इन केनियास कैपिटल कोडी नाइरोबी रे सिंस 1972 क्लियर चलो मते कहंतु द कांसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वाज पोस्टुलेटेड बाय ग्रीन हाउस गैस आपनकर पोस्टुलेट हेची कोठी क्विक the concept of greenhouse gas effect was first proposed by किए प्रपोज करिसंती सीसी पार्क कहले आपण मन जानसंती फास्ट आपनकर ह्यूमन जियोग्राफी इकोलॉजी ऊपर बुक आनिथिले फंडामेंटल टेक्स्ट बुक्स ऑन इकोलॉजी एंड ह्यूमन जियोग्राफी ऊपर सीसी पार्क आनिथिले बुक ऑन ह्यूमन जियोग्राफी एंड इकोलॉजी ऊपर बुक आनिथिले राइट आंसर आपनकर कोन हेबे ना जोसेफ फॉरियर फ्रेंच मैथमेटिशियन रिऑर्गेनाइज करथिले 1824 रे कि अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप करूची हीट लाइक द गैस वेसल्स हैला देखो सो 1824 रे आपनकर अर्थ एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर ही कैलकुलेटेड दैट एन ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ अर्थ at its distance from the sun should be much colder than it actually is. Next mate कहंतु the maximum biodiversity is found in maximum biodiversity आपनकर कोठी अछि quick जल्दी आंसर दियो विपत बिक्कू बिराजिनी चंद्रशेखर दमयंती रवि दीपू बिराजिनी रेणुलता जल्दी आंसर दियो कौन कहउछ समस्ते पचाछि द मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपनकर कोठी मिलिबो दैट इज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहिथिली these are the one wet आपनकर कोन इक्वेटोरियल जोन जोथिरे आपनकर कोन ना over half of the world of plant and animal species आपनकर होइथान ओके that is the tropical rain forest next मते देखो राइट आंसर आपनकर कोन ना tropical rain forest that hold the highest biodiversity on earth because they provide a stable warm and humid environment मते कोंतु who coined the term biodiversity term टाको आपनकर की कॉइन करथली की मते कहै के कहबो जल्दी मुटिक मारिया पूर्व तो माने कहि देबो रोशन सी करथिले आपनकर बे तुमको क्लास रो फर्स्ट क्वेश्चन एडा थिला त माने कर इकोसिस्टम रे गधस्थल एबे कहबो कि मैम हमको प्लीज गधा कहंतुनी तो माने कोन इकोसिस्टम तो माने कहथिल 1935 रे इकोलॉजिकल साइंस हां नहीं तो राइट आंसर बायोडायवर्सिटी 1985 है ना देखो so biodiversity was coined by Walter G. Rose 1985 after that apnaka biodiversity held in the national forum 1986 next one the discussion on sustainable development was started after submitting a report environment to the United Nations in 1987 the report was so 1987 रे first apnaka sustainable development ऊपर report रखा जाइथिला discussion हेतिला तो report apnaka actually कहा ऊपर थिला report ता actually रे apnaka कहा ऊपर थिला की मते कहि परिबो that कहा पर थिला मन रखो सबुटा गोटे गोटे क्वेश्चन सबु गोटा गोटे गोटे क्वेश्चन जेते बेले आपन को पचारा गला जति पचारा जीव कि फास्ट क्लाइमेट रिपोर्ट कोन थिला दैट इज द इनिशियल साइंटिफिक असेसमेंट रिलीज करथला किए ना आईपीसीसी के रिलीज करथला आईपीसीसी फोकसिंग 1990 रे आपन करो 1990 रे हेतिला है ना फोकस हेतिले या पर किंतु आवर कॉमन फ्यूचर ऊपर आपन को हेतिला यूनाइटेड नेशंस इन 1987 बिल्कुल भी नुहा आपन करो डी केमती हबो फिफ्थ असेसमेंट आपन को 2014 रे हेतिला फिफ्थ असेसमेंट आपन को 2014 रे हेतिला एमिति काई मन इच्छा मारुचो 1987 कोठी 2014 कोठी मन इच्छा मारा जाउची हां एठी आपन को पेरिस एग्रीमेंट रो फाउंडेशन हेतिला आपन करो ए जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2014 रे हेतिला एठी आपन को पेरिस एग्रीमेंट हे नथिला पेरिस एग्रीमेंट आपन को या परठु फाउंड हला ना हैला भूलभाल मारनी रे आसो नेक्स्ट चलो मते कहंतु इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ व्हिच मूवमेंट पचारिछि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ व्हिच मूवमेंट कोउथि रे आपन करे स्लोगन ता की देथिले कहि परियो हम जानि आंसर दियो जल्दी आंसर इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी दैट मींस आपन कर कोठी चिपको मूवमेंट रे नर्मदा बचाव रे कोन बे पानी सहित इकोलॉजी रे कोन रिलेशन कहिबेनी आपिको मूवमेंट सहित भी रिलेट करिबा
हाँ ना नहीं एपिको मूवमेंट भी आपनकर फॉरेस्ट सहित इंस्पायर्ड आपनकर डायरेक्टली फ्रॉम द माने एपिको मूवमेंट आपनकर कोठी साउथ इंडियन फॉरेस्ट सहित रिलेट हेतिला हाँ ना नहीं माने कर्नाटक रे जदी फाउ आपनकर फॉरेस्ट मूवमेंट कहबे ताले एपिको बाकी उत्तराखंड रे आपनकर एटा नर्मदा बचाओ तो वाटर रिलेटेड ना क्लियर एपिको मूवमेंट कर्नाटक हाँ पंड्रा हिल्स नेक्स्ट देखो मते कहंदु the concept of ecological transition was first used by the concept of ecological आपनकर ट्रांजिशन फास्ट की यूज करले के मते कहबो जल्दी the concept of ecological transition that was first used by इल्टन तो करी नथिले जानि छ आपण माने कारण ये आपनकर इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क एंड फूड वेब से गुडा को डेवलप करथिले सो राइट आंसर आपण माने कहा को देबे द कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कहा द्वारा ना बेनेट कहां का द्वारा ना बेनेट का द्वारा हेतिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट से थिले 1976 रे स्टडी करथिले ह्यूमन इंटरैक्शन विथ ह्यूमन कर कोन इंटरैक्शन होउची विथ रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम है ना नेक्स्ट So the term was introduced by the American anthropologist John W. Bennett in the 1976 book titled The Ecological Transition, Cultural Anthropology and the Human Adaptation. मते कहू which one of the following is not a fossil fuel या भितर कोटा गोटे आपनकर fossil fuel नुह मते के कहबो सुजीत बाबू सुजीत कुमार बेहेरा सुजीत समय दे आस्ते आज पुन गोटे फादर्स डे आज फादर्स डे तो माने विश करिसो ना ओई माय डियर गधस एंड गधीस फादर्स डे रे सब तमे घरे तम बापा मानन को सकाळ उठी मुंडिया मारिचो मुंडिया विश करिचो मुंडिया मारिचो ना आज फादर्स डे बोली भूली जाइछो त माने मदर्स डे तो कहीं बोलू ना फादर्स डे केंदी भूल जाउछो ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया भाई एक्चुअली सुजीत मो बापा को ना सुजीत कुमार पंडा तो सुजीत बाबू आसले क्लास को तो सेत पे मने पड़ी गला पचार देली बुझिली बुझिली सुजीत एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉसेस ठीक टाइम रे भूल क्वेश्चन पचार देली आसा मते कोन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल कोड आपनकर फॉसिल फ्यूल नुह गोटे को दैट मीन्स आपनकर फॉसिल फ्यूल जे हेई नथिबो ता माने कोन से गोटे हेवी मेटल थिबो कि एमानक भीतर को एलिमेंट आपनको लागु गोटे हेवी मेटल दैट मीन्स अ मिनरल ओर्स यूज फॉर द कोन ना न्यूक्लियर से जोटा रिलेट होतबो आपनकर यूरेनियम 235 हला 232 हला 238 हला एमाने कोन आपनकर कोन डिग्रेडेबल की नुहंती एमाने आपनकर कोन नेचुरल नुहंती एमाने जाई कि कोन रुहंती So fossil fuel कले natural gas, petrol derived from the petroleum and the coal and formed from the remains of the ancient plant and animals buried for 1 billion. So choose the correctly matched option from ascending order. Guys, ascending order टिके relate करे देला कोटा को हम relate करेबा. अरे वाह हे गला तो सुजीत बाबू कोन असुविधा हला आपन को पुओ विश करचंदी आपन को ता माने भी तो सेलिब्रेशन ना एंड एमिति नाही कि बापा आम सहित अच्छंती मां आम सहित अच्छंती ताहाले जाई कि हम विश करिबा नहले करिबानी से जोठी भी अच्छंती आपण माने तो देखि खुशी होथुवे ना हम माने विश करि परिबे सेतरे कोन अछि आसन तो राइट आंसर कोन हे जे आपण कर ना फास्ट सब बेले मन रखिबे स्टार्टिंग करिवे ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिजम्स आसीबो तापर ऑटोमेटिक कम्युनिटी पॉपुलेशन बायोस्फीयर तापर बाय हैला क्लियर एते कि जिंस क्लियर ऑप्शन सी वेरी गुड आसा सो फास्ट आपनकर कोन हे जाउची ना इंडिविजुअल पॉपुलेशन माने ऑर्गेनिजम्स कोटे इंडिविजुअल माने कोटे ऑर्गेनिजम तापरे पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोम देन बायोस्फीयर हैला हे बायोम देन बायोस्फीयर एंती वाला तो ऑप्शन नाही रे एटा कोन ऑप्शन ए कहि देछि कि ना तो बी कोन कहि छि पॉपुलेशन कोन स्टार्टिंग कलानी ऑर्गेनिजम्स तो कम्युनिटी अच्छा 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 सॉरी सॉरी बी ही अब राइट आंसर सॉरी मोर ही भूले गला देखि नथि सिंगल ऑर्गेनिजम्स भाबी केटे मारि देछि ऑर्गेनिजम्स फॉर पॉपुलेशन तापर कम्युनिटी तापर इकोसिस्टम एमती हवा दरकार ऑर्गेनिजम्स फास्ट रहइबो किंतु पॉपुलेशन ता रहइबोनी यस ऑल हबनी छ ऑल हबनी हैला चल
नेक्स्ट देखो, which of the following statement is correct according to the competitive exclusion principle? Two species cannot coexist in the same community if they have the same niche. Niche describes the physical space occupied by an organism, not its functional role in community. आपनकर इकोस्पेसीस is an unit of classification which contains one more records. ताल राइट आंसर एठी आपनकर कोन हेचियो समस्तकर फेवरेट ऑप्शन मालो चलो मार दिया आंसर कोन हबो ऑल ऑफ द अबव मारी चलो मु ही सीए तमे ही सीए जी ही भूल मारिबो हास तो राइट आंसर कोन कहूची ना 2 एठी आपन को पचाची स्टेटमेंट कोटा आपनकर करेक्ट एठी जेतबेले कहिची नीचे डिस्क्राइब द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिजम्स नॉट एट फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी एठी द फंक्शन को भी बुझौची ताहले गोटे जदी एलिमिनेट हेई गला ताना ऑल ऑफ द अबव तो हबनी तापर काई पढ़िबो एटा तो स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि ना जदी हमें कहूचे दिस इज एन अलाइनमेंट जोटा आपनकर कोन ना गस कॉम्पिटिटिव आपनकर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एटा मेंशन करा जाईची स्टैंडिंग द आइडेंटिकल नीचे कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट स्टेबली कोन कंसिस्ट करि परिबे नाही हला गवर्नमेंट ऑप्शन देखि कि धड़धड़ा किक मार दोछ ना रे हाय देखो ये एलाबोरेट करछि त माने पढिबो नेक्स्ट मते को इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन द सॉइल इज नोन एज जेते बेला हमु कहिछि सॉल्युबल सॉल्ट रो दुई स्पेसिस सेम अरे बी हबो ना ए केते बेले कहली त मानकू एटा बी हबो रे बी ए केते बेले कहली बी ही अछि ना अच्छा तमे यार आंसर कहउछ की यार आंसर कहउछ की नीचे कथा कहउछ की या कथा कहउछ की छुआ बी टा केमती हबो को ए केमती हबो बी काहे की हबनी कहउछ बिकॉज द नीचे आपण जदी हमें कहउची नीचे एनकोपास करि परिबनी ऑर्गेनिज्म रा फुल फंक्शनल रोल को डाइट को बिहेवियर को एंड टॉलरेंस को एटा आपण को पछची इनकरेक्ट बा एटा आपण को पछची स्टेटमेंट इज करेक्ट एटा आपण इनकरेक्ट हे जाउची नीचे डिस्क्राइब द फिजिकल स्पेस occupied by an organism not its functional role in community कारण आपण को नीचे डिस्क्राइब करछि फंक्शनल रोल को बिहेवियर को तार डाइट को तार टॉलरेंस को सब को डिस्क्राइब करूछि ताहाले आपण को बी केमती हैला कोन मते एटा आपण इनकरेक्ट हबो ना आपण को करेक्ट पचेरि छी हैला कोटा पुणी कहउछ अरे एटा ही ठीक अछि बायोस्फीयर एंड रे अछि देखो नेक्स्ट मते को सॉरी देखि देला को इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन द सॉइल इज नोन एज salination soil आपनकर salt रू salination saline nature means आपनकर कोन saltness त आपण माने पळैला desertification हैला माने आपनकर मरुभूमि से रिलेटेड soil erosion तो जानि छथि आपण माने bioaccumulation माने कोन होइला ना gradually जेतबे हम कोन गोटे केमिकल बिल्ड अप करूचे जेतबे भीतर आपनकर केमिकल हैला टॉक्सिन हैला रहि बिल्ड अप करूचे the body रो tissue and the living organisms over the time then we can relate it with the bioaccumulation हैला next so मते कहि देला नेक्स्ट कथा द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूट कोन हबो गायत्री मॉर्निंग हेनी तमे आउ टिके सुओ जाओ मॉर्निंग हेनी सोई पड़ो टिके मॉर्निंग हेनी लो सोई पड़ो टिके सोई पड़ो जा कोन हबो राइट आंसर कोन हबो कॉलोनी एने कॉलोनी बा आपनकर लोकलाइज्ड क्लस्टर रे पड़ैला माने आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स लिविंग आपनकर गोटे क्लोज स्पेस रे माने क्लोजली if they will live closely together ताहाले हम ता कहि परिबा जीनस आपनकर हबनी डेफिनेटली जेते आपनको द सम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड कहै माने पछते गोटे स्पेसीस रा केतेटा आपनकर अछंती काउंट करंतु हमें कहूचे टाइगर आपनकर अछंती ताले सेम स्पेसीस रा आपनकर केतेटा रहउचंती दैट मींस द फंडामेंटल बायोलॉजिकल ग्रुप comprising the similar individual capable of interbreeding and exchanging their genes तांकर हेबे स्पेसीस सेमानक भितरे ही आपनकर इंटरब्रीडिंग हेई परिबो हैला नेक्स्ट चलो नमस्कार अजय बाबू बहुत जल्दी क्लास को आसिले A species is a group of similar individual organisms that can usually breed among themselves to produce fertile offspring. Okay, next mate कहंतु stratosphere contains an important species which protects life on earth is कौन हबो oxygen ozone nitrogen hydrogen कौन हेई परिबो quick गायत्री तमे अच्छा क्लास रे आंसर दोउचो न सोई की खुआ मते the stratosphere
कंटेन करूची कोन ना ओजोन लेयर को क्लियर एति जिंस दरकार किछि डिस्कशन नो चलो so stratosphere contains the ozone layer which is high concentration of ozone molecules. This layer is a vital for the earth. Next, a set of organisms of the same species occupying a particular space is known as same species gote particular space 6टा उठलणी आ 10:40 रे क्लास को कम आसलो 6टा उठी 10:40 रे कम क्लास को आसलो रुआ चंदन सर को रुआ गाइस गोटे मिनिट खाली मु किछि कहिनी तो साउंड केमदी आसीबो काइंदी होच अरे बहुत जोरे भूख लागुला बाटरी टी कोन पके के आसीली केमदी होच तम माने तो मु पूछो दिली ना न कहि की कोन करे तम माने को किछि कहि नथली यार खाई नथली लंच माने ब्रेकफास्ट कर नथली तो भूख बहुत जोर लागुला देखो सो को तो पॉपुलेशन डेंसिटी केमिति माइंड को आसुची पॉपुलेशन डेंसिटी मींस आपनकर कोन ना मेजर करिबा स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया जते कि डेंसिटी माने कोन आपनकर फॉरेस्ट डेंसिटी हैला पॉपुलेशन डेंसिटी हैला ता माने कोन गोटे इंडिविजुअल को कैलकुलेट करूची प्रॉपर एरिया रे पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर आपनकर केति की पॉपुलेशन आपनकर प्रेजेंट अछि नो मैटर फॉर द एनिमल्स होंदु या फिर आपनकर लिविंग बीइंग्स होंदु माने आपनकर एनिमल्स होंदु या फिर प्लांट्स होंदु okay the population एठी कहूची that is the set of organisms of the same species occupying a particular space is known as the population clear एति की जिंस next आंतु अरे बुट्ट भजा खाइली खाइबो त माने बुट्ट भजा खाइबो त माने नियो सी बुट्ट भजा खाइली एमिति गोटे अमृत खाइ दे के आसिलेन मागुच त माने आसो next माने कोन the water the prevention and control of pollution act was enacted in कौन हबो राइट आंसर क्विक सेमिति बिकु बाबू ऑप्शन नाही चाकरी को ले जो मोर एक्सट्रीम लागिला तो सेति पे टिके छिडा हेबी ना मुनी आउरी घंटा डे क्लास अछि त माने आसो 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 आंसर दिया बहुत तो माने मो कथा भाबुछ तो माने भाबुछ बोली मु धन्य आइ गली आ भाबोनी त माने हाई प्लेटर सकाळ के बने की दवरे आसो मते को इंडिया रो फास्ट हाई प्लेटर रो गोटे स्टोरी काली उ नै की त माने कहबी पछरे हला मते कोंदो इंडिया रो फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लॉ enacted हेथिला एंड होथि पाई ना टू मेंटेन एंड रिस्टोर द wholesome meter of water आमे कहि परिबा माने wholesomeness of the water that 1974 ओके
1986 रे आपनकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कोन ओवर रिएक्टिंग हेतिला मन अछि तो इंडियन आपन द ईयर इंडिया पास करथिला द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से मन रखियो नेक्स्ट चलो Which organization was established as a major outcome of the 1972 Stockholm Conference on Human Environment? की कहबा आंसर जल्दी दियो आपनका मम्मी बन्नी देबे ना मैम मो मम्मी मु रहउची तो माने रूम नेकी भुवनेश्वर रे मो मम्मी तो जाके ढेंकानाल रे मने बन्नी की किए दबो को मतलब को which organization was established sorry was emerged हेतिला या फिर एस्टैब्लिश हेतिला में कहि परिबा 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सहित देखो गोटे गोटे करिके बुझो माने एपट सेपट होनी हैला आयुष्यन आपनकर कोन फोकस करू छि रे केबे फाउंड हेतिला ना 1948 मच अर्लियर ये आपनकर फाउंड हेतिला कोथिरे ना फ्रांस रे हेतिला कोथि पई ना एनकरेज करबा लागि इंटरनेशनल कंजर्वेशन कोऑपरेशन मानकु केबे हेतिला ना आपनकर 1948 एंड को जगह रे हेतिला ना फ्रांस रे WWF आपण मानकु कोन कहली ना दैट आपनकर स्विट्जरलैंड रे हेडक्वार्टर अछि 19 वर्ल्ड वाइड फंड आपनकर 1991 रे आपनकर ये कोन ना एस्टैब्लिश सॉरी 1961 ना 91 1961 आपनकर स्विट्जरलैंड तापर रहिला आपनकर कोन 1972 स्टॉकहोम सहित UNEP और द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को आपण माने रिलेट करे दे क्लियर Yes, UNDP नाइ छुआ UNDP 1965 रे जे एड्रेस करूला ग्लोबल प्रॉपर्टी कहा को नै कि ह्यूमन डेवलपमेंट रादर दैन द एनवायरमेंटल ट्रैकिंग एला चंद्रशेखर UNDP नाही UNEP हैला चलो तो राइट आंसर अपन कर UNEP हे गला नेक्स्ट मते को UNEA आसो जल्दी UNEA कहले कोन बुझिबो केनिया हां कहली पे सब पढ़ी सारलेनी को मते को UNEA कथा पचारी UNEA कोन कहूची now was created during which international conference held in 2012 ये क्या हो गया देखो को UNEP was created during which international conference held in 2012 to strengthen global environment governance तो strength करिबा लागि आपनकर कोठी Rio 20 summit रे आपनकर ये हेछि Rio 20 conference रे हेछि United Nations Environment Assembly was established during the 2012 United Nations Conference on Sustainable Development Sustainable Development to कोन govern UNEP ओके ऑप्शन सी केमती हबो त मानकर ए देखा जनी सी आडू सेटा पढोछ ये पुनी बी कहछि ये कोन बी कहछि देखो Rio 20 लिखिछि किंतु बीटा लिखि देछि आ टिके बाय डिफॉल्ट दोष अछि आ ऑप्शन दा लिखला आले हैला ए हम तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग ए कॉल फॉर द Rio 20 कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस को नै हैला नेक्स्ट मतलब which international convention provides a framework for the conservation and wise use of wetlands across the world कोन हबो मैम आपण ओटे छियो प्ले रखंत रोसे करियो आ फ्री रे पाठ पढियो अरे भाई मो रूम रे खाली संडे रे ही रहउची रूम सफा करिया पई एल्स मोर रूम रे किछि काम होय सकाळ तो सोईबी माने राती रे तो 12टा गोटे रे सोईबी सकाळ उठीबी 8टा रे उठी की जल्दी जल्दी ऑफिस बाहरीबी 10टा रे दिन जाक रूम खाली तो रखिबी की काहे की रहयो मो पाखरे को कोन पढियो रही वाह राइट आंसर एठी कोन हबो व्हिच इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोवाइड करूची क्विकली कहि दियो Convention on Conservation and Wise Use of the Wetlands एटा तो ऑलरेडी अपन मान जानि चंदी एटा को बासेल कन्वेंशन कहले अपन ह्यूमन को रिलेट करते रामसन कन्वेंशन जानि चंदी कीटो प्रोटोकॉल वेना कन्वेंशन अच्छा वेना टा अपन मानु कहनी वेना कन्वेंशन अपन रिलेटेड कहा को दिस इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्रिएट करछि कोन नाही अपन को वेना कहले भी ओजोन लेयर O3 को रिलेट करबा प्रोटेक्शन टू द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर हैला आसो नेक्स्ट मते कहि दियंतु द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड आपनकर असला रामसर कन्वेंशन अंडर रे कोथि पई
ना जो गुडा आपणकर माने जो वेटलैंड्स माने रहिचंती से माने जदि आपणकर कौन सी एंडेजर्ड स्पेस माने ग्रुप रे पळी आसिले माने आपणकर कोन थ्रेटेंड ग्रुप रे पळी आसिले से मान को रिकॉर्ड मेंटेन करियो मॉन्ट्रियस रे तो एटा आपणकर केबे आसला ना 1990 रे मॉन्ट्रियस आपणकर आंसर अंडर रे पळी आसला माने ताको अडॉप्टेड करा गला 1990 रे एंड रजिस्टर करा गला थ्रेटेंड रामसर वेटलैंड मान को थ्रेटेंड रामसर वेटलैंड साइट्स मान को कोन ना कंजर्व करिबा लागि ओके 1995 ना ए 1990 आसो सो 1990 देखलो ये खाली यार टिके दोस ना ना ठीक अछि बी लिखिछि 1990 रे आपनकर हेतिला क्लियर नेक्स्ट चलो मते कोंतु व्हिच टू एंड हां करेंटली आपनकर कोउटा ना केवलाडियो नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक ए दीटा आपनकर कोउटी ना मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड रे जति के हमर इंडिया रो वेटलैंड्स अछन ए माने अछन मते कोंतु व्हिच टू वेटलैंड्स वेयर डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया ऑन अक्टोबर 1 1981 आज तो ये भी कोई क्वेश्चन है वाला तम मान को कहूची मो कथा एते भाबिया पई मते के आसी खाया बने के दबो मते के आसी गोड़ घस दो तम मान को कहूची मु कहिछि तम मान को कि पिला माने मु खाई परनी गोडे बुझ रोसे मो पाखे आसी के रोसे करी दबो बोली को दिन मु तम मान को कहितिले रे हां काई एमदी होउछ निद भांगिनी कि बाउली होउछ सब क्लास मझिरे आसा सो राइट आंसर आपनकर कोन हैला चिलिका लेक एंड केवलाडियो नेशनल पार्क सहित हमें जीवा आपण मान जानि सन्दी चिलिका त हमर ओडिसा रे केवलाडियो नेशनल पार्क कोठी कोठी अछि केवलाडियो नेशनल पार्क क्विक आंसर दियो गधस्थल अरे राजस्थान कोठी अछि राजस्थान रे हैला चलो बाकी लोकटक लेक आ उल्लार लेक कहि देला देखि लोकटक आ उल्लार कोठी अछि लोकटक त आपण माने मणिपुर उल्लार आपण माने कोठी लेट करेबे क्विक कोन गला अछि नाकड़ा जी गला को कौन हम जम्मू काश्मीर उल्लार लेक आपनकर कोठी अछि जम्मू काश्मीर सहित रिलेट करिया भीतर कनिका आपनकर कोठी अछि ओडिसा रे अछि संभार आपनकर कोठी अछि क्विक संभार लेक आपनकर कोठी अछि भीतर कनिका 2002 रे डेजिग्नेट हेतिला संभार लेक 1990 रे किंतु अछि कोठी नाको पई कोन मेडिसिन नेबी रे आसो कोठी जल्दी संभार संभार राजस्थान वेरी गुड चलो नेक्स्ट आउ रिलेट करू मते कहंतु अगेन गाइस कहूची 1999 रे आपण माने ओपीएससी एसओ पई प्रिपरेशन करि परिबे अनुशासन बैच रे ऑलरेडी क्लास स्टार्ट ही सलानी जल्दी जल्दी आपण माने जॉइन करंतु पूरा डिटेल रे थ्योरी रे हमें पाठ पहुंचे ए जोटा सब क्वेश्चन समर अछि ऑलरेडी स्टार्ट ही सलानी ता ऊपर जो माने मोर बैच पिला थिबे जे माने ऑब्वियसली क्लास रे आंसर देथिबे मते कहंतु सहकारी बैच जदि आपण माने नेबाकू चाहउछन जूनियर असिस्टेंट बैच इटा 1199 रे एनरोल करि परिबे जदि पुलिस एसआई पई बैच नाउ चाहउछन 399 ओके only 399 asa mate ko which convention specifically aims to combat desertification and land degradation in vulnerable regions kaha ko relate kareba छुआ साइड दियो आंसर गायत्री तमे क्लास रे अछो मु साइड हेबिनी तमे कथा कहउछो कौन कहउछो राइट आंसर आपनकर कोन हबो यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशंस आपनकर कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन कहिथिली ऑलरेडी साइट्स कहले त मानकु कहिथिली ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीशीज मानकु नै कि आपण माने साइट्स रिलेट करबे आईडब्ल्यूसी ला इंटरनेशनल कोन दैट इज द व्हेलिंग कन्वेंशन सॉरी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से रिलेट करेबे हैला आडे जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के जानि छ कोन एडा अगेन हमें कहि परिबा व्हेल मानकर कंजर्वेशन लेकी ग्लोबल आपनकर जति के व्हेल माने अछंती ओशन रे अछंती से मानकर कंजर्वेशन करिबा लागि आईडब्ल्यूसी माने कोन एस्टैब्लिश हेतिला क्लियर आपनकर यूएन ये त आपण जानि छ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली नेक्स्ट माने कहि दिनु राइट आंसर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी 1994 तमते कोन ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कोन ऑफिशियल नेम आपनकर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस र कोन हबो जल्दी
ऑफिशियल नेम कौन होची यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस तो आपनकर यूएनएफसीसीसी तीनटा सी लगे दबो हैला यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन हेले आपनकर यूनाइटेड नेशन समिट रे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन तो स्टॉकहोम पा गइची ता माने एनवायरनमेंट समिट स्टॉकहोम गइची एनवायरनमेंट समिट ता सहित रिलेट करबा ओ सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन हेले आपण मान दीटा रिलेट करिवे गोटे बासेल गोटे स्टॉकहोम दीटा नेशंस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन सहित रिलेट करि देबे हां तो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट तीटा जगह हेबा कथा माने ह्यूमन एनवायरनमेंट सहित देखिबा हाँ ह्यूमन एनवायरनमेंट है The official name of the Stockholm Conference held in 1972 is the United Nations Conference on the Human Environment. It was the United Nations first major conference on the international environment. Next question mate कहला which of the following documents was an important outcomes of the 1992 Earth Summit कौन हबो right answer quick 1992 Earth Summit कथा कहिछि right answer दियो कौन पचाइछि आउथरे पढा ना कहिछि मेजर आउटकम ऑफ द Earth Summit 1992 कौन हबो right answer quick Critopotacal UNFCCC relate करैथिली एजेंडा वेरी गुड एजेंडा 21 जानछ कोन दिस इज अ नॉन आपनकर कोन बाइंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी एन एक्शन प्लान गोटे सी तो कहि जे एजेंडा 21 is a non binding voluntary implemented action plan in the United Nations with regard to sustainable development and it is a product of the United Nations Conference on Environment Development okay 1992 Brazil Next मते कोन दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोन अछि कहला आंसर कोन कहै छी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स were adopted by all United Nations member states in 2015 and are designed to be achieved by which target year को target year सहित हम याको रिलेट करू को 17 goals and 169 subjects yes क्या यार आंसर मते टिके दियो कहि जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीस कहि छि ता माने हमें कहा रिलेट करबा ना जेति कि हमर गोल अछि आगु को जाई कि द डिफाइन कहि छि द टारगेट ईयर एस्टैब्लिशिंग बाय द यूनाइटेड नेशंस आपनकर कोन ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड दैट इज इन द 2030 ऑप्शन सी 2030 तो कॉप 21 2015 हेतिला हैला हां yes चलो नेक्स्ट So 2030 Sustainable Development Goals SDG 193 member states of the United Nations in September 2015 रे हितिला तापर आपनकर सेप्टेम्बर 15 रु टारगेट निया गला 2030 पर्यंत नेक्स्ट मते कोन as per the Wildlife Protection Act 1972 to no alteration in the boundaries of a tiger reserve shall be made except on a recommendation of the National Tiger Reserve एटा रिपीट हे जाई क्वेश्चन ता को तथा भी देखिया क्वेश्चन रिपीट हे जाई को मते कोन हबो राइट आंसर Now, without having the single permission of the NBWL, the National Board of Wildlife, NBWL, the National Board of Wildlife, ता बिना परमिशन रे आपनकर बाउंड्री एक्सटेंड हे परिबो ना नेक्स्ट चलो मते को which of the following authorities is mandated by the Wildlife Protection Act 1972 to accord approval to the tiger conservation plan prepared and submitted by a state गवर्नमेंट कौन हबा राइट आंसर कहलो देखी क्विक कौन हबा राइट आंसर रिपीट एटा ना तो एटा रिपीट हेइनी आंसर देला देखी एटा केमते रिपीट हेइची कोन से करिछि आ एनटीसीए चलो एनटीसीए कोठी अछि ओप सॉरी एनटीसीए कहूची मारुची ताकू पुनी चेंज करूची हां सर नेक्स्ट मते कोन which of the following sustainable development goals ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all तो एटा आपनकर को ग्रोथ अकॉर्डिंग जीवो मते को एसडीजी 4 रे आपनकर कोन कहूची द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल हेले आपनकर एसडीजी 4 कोन क्वालिटी एजुकेशन फॉर all SDG 7 कहले आपण माने कोन करिवे फोकस करबो providing the access to the affordable reliable sustainable and the modern energy but SDG 6 कहले आपण माने water and sanitation को रिलेट करेबे काहू water and sanitation को रिलेट करेबे SDG 5 कहले कोन कहि दबो देखि SDG 5 कहले आपण माने काहा से रिलेट करिवे ना
ना जेंडर इक्वालिटी कहबो जदी कोन ना वुमेन गर्ल्स बॉयज सब आपनकर जेंडर इक्वालिटी को नेकी आपन मानकर रिलेट करू छी जेंडर इक्वालिटी हैला नेक्स्ट चलो सो मते कोंतु कि the greater one horned rhino is listed under the scheduled केते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मते कहलो केते हबो 17 गले कोन मन रखिबो बुझी पालिनी 17 गले कोन मन रखिबो माने सदस्य कर आउथरे कहलो पचलो कोन पूछछ the greater one horned rhino is listed under the schedule केते शेड्यूल आपन कर लिस्ट हेची मते की कहि परिबो सबु डाउटेड क्वेश्चन आपन कर सबु डाउटेड क्वेश्चन किंतु वन अंडर रे आपन कर कोन हेची ना लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 of the wildlife protection act granting the highest possible legal protection to the one horned rhinoceros हैला माने जदी आपन कर कोनसी लीगल हैला पेनल्टीज हैला प्रोटेक्शंस हैला ए मन को नै नेक्स्ट देखो so the greater one horned rhino is listed under schedule 1 of the wildlife protection act 1972 wildlife protection act 1972 was passed on August 21 1972 but was later implemented on September 9 1972 the date when it was being inaugurated the date when it was being launched mane rakhibe next mate kohantu which of the following sustainable development goal SDGs 17 goal अच्छा गोल लिखुछ कि ना 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 दरकार नहीं 17 गोल ले लिखुछ हम केमते जानिबी तमरो मु भाबले गोल लिखु गोल ले लिखुछ गोल्स लिख ना माने 17 टा जाको तो मन रखिया को पड़िबनी किंतु इंपोर्टेंट जोडा आपन को मन रखिया को पड़िबो जेंति आपन कर 7 हैला 17 12 15 जोडा ऑप्शन आसु सेडा को आपन माने मन रखिया को पड़िबो हैला 12 टा आपन कर कोन रहूची ना मन रखी दियो 17 टा कारण आपन कर सबुथुर गोटे गोटे ऑप्शन जदि 17 टा को मन रखले ताहाले सिना आपन माने एलिमिनेशन प्रोसेस रे जाई परिबे आसो एसडीजी 12 आपन कहले कोन कहूची ना कंजर्व करूची माने कंजप्शन द पैटर्न्स ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी आपन कर जति इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अछि तार मेथड को आपन कर ये प्रोडक्शन करिवो तो राइट आंसर आपन कर की हिजो एसडीजी केते 15 आपन कर राइट आंसर हबो लाइफ ऑन लैंड प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करके रखुची नेक्स्ट देखो 15 टा प्राय एग्जाम रे पछरे The United Nations General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development in 2015 with the global goals आपनकर SDGs 15. Next मते कहि दियंतु CITES is an international treaty on CITES आपनकर this is an international treaty कहा ऊपर नै कहिलो साइट्स कहले आपण माने एयर पोल्यूशन तो हबनी एयर पोल्यूशन हेले आपण माने जानि सन्दी इंटरनेशनल ट्रांसबाउंडरी स्मॉग एग्रीमेंट सब होईची हो ना तो राइट आंसर आपण माने कोन कहबे ना कंजर्वेशन ऑफ एंडेजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को रिलेट करेगा तो ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीशीज ऑफ fauna and flora in order to regulate the international trade in endangered species of wildlife the convention on international trade in endangered species etc etc on रखिबे next कोंदु मते कोंदु if any water body there is high BOD value then it is generally जदि को वाटर बॉडी सहित आमे सी कमे मारुचो आसा मते कोंदु if any मु बी मार देछि कि त माने सी करूचो हां ठीक अछि मते को if in any water body there is high BOD value then it is generally कोन कहूची ना हाई BOD वैल्यू जदि आपनकर रहूची ताहाले हमें ताकू कोन कहि परिबा जनरली दिस इज कोन ना वेरी पोल्यूटेड रे जीव ना पोल्यूटेड थिबो ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen needed by the aerobic microorganisms to break down the organic material present in a given water sample so high BOD that indicate the large amount of water amount of organic waste सुत्र आपण सीवेज जीव रन ऑफ जीव ए सब जिंस आपनकर वाटर सरफेस की मिसुची नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहिलो कोन कहउछ जल्दी यस वेरी पोल्यूटेड मते कोंदु काली बाबू आपण भी आज क्लास रे छथि हो आ समरे आंसर दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस इज रिन्यूएबल वन या भितरु कोटा आपनकर रिन्यूएबल सोर्सेस के मते कहि परिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल वन Which of the following sources is the renewable माने पुणी थरे आपनकर माने हमें करि परिबा
यूरेनियम कोल नेचुरल गैसेस एमान को हमें कोन फॉसिल फ्यूल से रिलेट करछि ये हबो तो आपन का रिन्यूएबल रिसोर्सेस होछि टिम्बर सिंस ट्रीज कैन बी replanted and grown again timber is considered a renewable biological resources मते कोन द प्लांट व्हिच grow well only in light are known as सुना जो प्लांट्स माने आपन को ओनली प्रेजेंस ऑफ लाइट रे ग्रो करि परिबे माने राति रे समानकर ग्रोथ जस्ट इक्वल टू 0 ताहाले तांको हमें कहा कहि परिबा जल्दी plant growing based in the sunlight they are what xerophytes abani xerophytes mane kon jo mane extremely water scarce area re mane desert environment re bodhe taku ame xerophytes कहूजे helophytes कहले ame kon कहि परिबा heliophytes कहले ame कहि परिबा water presence मान sorry sunlight presence रे sun loving plants structurally adapted to achieve the optimum growth in the presence of sunlight they are the heliophytes clear एति कि जिंस and आपनकर epiphytes कहले माने कोन बुझ परिबे हाँ मते कोन एपिफाइट्स कहले अपन माने कोन बुझि परिबे प्लांट दैट ग्रो हार्मलेसली अपॉन अदर द ट्रीज माने आपनकर अलगा प्लांट माने को ऊपर कोन डिपेंडेंट थान जेंति निर्मूली लता से मान को हमें कहि परबा विदाउट माने कोन फाइंडिंग अ फिजिकल सपोर्ट दे कैन नॉट रिवाइव और दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर अदर नेक्स्ट मते कोन दो दीस आर द सन लविंग ट्रीज मते कोन दो द गैस इन्वॉल्वड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज जो गैस पई आपनकर भोपाल गैस ट्रेजेडी हेइथिला What is the gases? के कहबो हेलियो माने सन आ गैस के कोन तो राइट आंसर आपनकर कोन हे जाउची कि मते कहबो गैस रिस्पांसिबल हाइड्रोजन सल्फाइड द ही नथिला दिस इज आल्सो टॉक्सिक कहबा बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी then methyl isocyanate आपनकर हेतिला दिस इज a highly volatile and आपनकर कोन lethal gas कहि परिबा लीक हेतिला यूनियन कैबिनेट प्लांट जोटा कि डिसेंबर 1984 हेतिला हला तापर 86 रे आपनकर एक्ट आसीथिला तो देखो द भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred on the night of December 2 1984 at the Union Carbide Indian Limited pesticides plants in Bhopal Madhya Pradesh. The leak involved methyl isocyanate is a highly toxic volatile liquid used in the production of the na carbamated iodides hla next देखो मते कोंतु spraying of DDT on crops causes pollution of जदि हमें DDT स्प्रे करूछे पोको पोको को सब मारिबा लागि तो ए जो DDT स्प्रे होउची आपनकर क्रॉप्स ऊपरे एक्चुअली रेट आपनकर लीड करूची कोन जदि हमें DDT करूछे आपनकर कोन एयर की सॉइल पोल्यूशन होउची कि हबो कि या फिर आपनकर सॉइल सहित वाटर पोल्यूशन हबो कि मते कहि परिबो एटा आपनकर का सहित वेरी गुड सॉइल सहित वाटर पोल्यूशन आपनकर ये हबो कारण ये सेटल करूची हेवीली इनटू अर्थ मैट्रिक्स एंड रन ऑफ करूची इक्वल आपनकर कोन इनटू एक्वाटिक इकोसिस्टम जदि हमें एयर एंड सॉइल कहूचे कि क्रॉप एंड सॉइल कहूचे माने क्रॉप एंड एयर कहूचे कारण एयर सहित हमें एटी रिलेटिंग करूने कारण हमें डीडीटी स्प्रे करछी या आपनकर पर्टिकुलर प्लांट ऊपर आपनकर एयर ऊपर को तो जीवनी ना हां ना नहीं दिस इज नेक्स्ट चलो So soil when DDT is sprayed on crops, much of it settles directly onto the ground of its vast of plant surface by rain where it binds strongly to the soil particles. Next mate ki koibo na in radio communication the signal emitted by the transmitting antenna are reflected on जेतेबेले हमें रेडियो कम्युनिकेशन करूछि जेतेबेले आपनकर ट्रांसमिट होछि एंटेना रु तो एटा एक्चुअली रे को लेयर रे आपनकर किए कहलो स्ट्राटोस्फियर कहूची माने आपण माने जानसंदी ओजोन शील्ड जोन आमे ताकू कहूचे ओजोनोस्फियर आपनकर कोन जोटा को आपनकर ओजोन एक्जेक्टली स्ट्राटोस्फियर रे प्रेजेंट होची सेटा सेति में हमर स्ट्राटोस्फियर को ओजोनोस्फियर कहै किंतु जो आयोनोस्फियर रहूची ये कंटेन कोची हाई कंसंट्रेशन ऑफ आपनकर कोन ना जेति कि आपनकर कोन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन्स रहउसंदी जो माने इफेक्टिवली हाई फ्रीक्वेंट रो कोन रेडियो वेव्स मानकू बैक करंदी पुनी अर्थ को हैला नेक्स्ट चलो So right answer ionosphere. The radio communication is the ionosphere plays a crucial role in long distance transmission known as the skywave propagation. Here is how it works. Ionization, this upper layer of the atmosphere contain a high concentration of the electron of ions created a solar radiation. Next one कहलो second ozone hole was detected over second गोटे तो ozone hole आपण मान जानि संती अंटार्कटिका रे the first ozone hole discover हेतिला by the scientist of 1980s रे आपनकर हेतिला बट सेकंड आपनकर कोठी छि गोटे अंटार्कटिका रे हेले आ गोटे आपनकर चांसेस अछि हेबार कोन दिस इज अ सीवियर सेपरेट डिप्लेशन इवेंट लैटर कंफर्म हेछि कि आपनकर जदी नेक्स्ट हबो आर्कटिक रीजन रे हबो माने नॉर्थ पोल रे आपनकर हबो क्लियर एति कि जिंस कोठी आर्कटिक रीजन रे आपनकर हबो देखो
So, while the first and most famous ozone hole was discovered over the Antarctica, the second significant depletion area, often referred to as the second hole, was later detected over the Arctic region. Next, mate kahiba, which of the following is a major component of water pollution in Bengal Basin? The Bengal Basin कहूची से एरिया रे आपनकर major water pollution काहाकु नेकी हबो की कहिबो? Quick. कौन कहूच? मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स इन बेंगल बेसिन ता सहित आम रिलेट करें परिबा कहा सहित कारण हाईली डेंजरस जियोग्राफिक कौन सॉरी आपनकर जियोजेनिक केमिकल आपनकर आर्सेनिक रहइबो हैला आर्सेनिक जेतेबेले वाटर ऐड हुए को डिजीज हुए के मते कहइबो आफ्टर हैविंग आर्सेनिक इन द वाटर द डिजीज कॉज्ड इज को डिजीज आपनकर हबो मते के कहइबो जियोजेनिक आर्सेनिक यस मते कोंदु आर्सेनिक रहिले वाटर रे को डिजीज हुए ऑप्शन देबी ना त माने कहिबो ब्लैक फुट वेरी गुड एसकेआर कहितान देबे हैला चल व्हाट आपनकर कोन ब्लैक फुट डिजीज हुए सी ना बेंगल बेसिन कवरिंग द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इंडिया एंड बांग्लादेश इज ग्लोबली recognized for the having one of the largest mass poisoning in the history due to the natural occurring arsenic and या बदल रे आपनकर कोन हुई ना ब्लैक फुट डिजीज आउ मते कहिला देखी जदि आपनकर मर्क्यूरी प्रेजेंट रहिबो वाटर रे जदि वाटर रे आपनकर प्रेजेंस मर्क्यूरी रो बढ़ी गला ताहाले को डिजीज हबो जल्दी मर्क्यूरी रो प्रेजेंस रे वाटर रे को डिजीज हबो जल्दी मिनमाटा ओके एम फॉर मर्क्यूरी एम फॉर मिनमाटा जदि कैडमियम रहिला जदि वाटर रे कैडमियम रहिला ताहाले को डिजीज हबो इटाई वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कौन पचारि छी now without greenhouse effect the average temperature of earth's surface would be जदि greenhouse gases न थांता माने global warming हो न थांता ताले average temperature आपनकर earth रा केते हेई थांता without the atmospheric heat trapping the planet would lose all its warm space that means ये drop करि थांता गुटे कोन ना comfortable from the 15 degree to minus 18 degree केते पर्यंत ना 15 डिग्री सेल्सियस टू माइनस 18 डिग्री सेल्सियस पर्यंत एई जोन से रही थांता केते माइनस 18 डिग्री सहित रिलेट करेइबे नेक्स्ट देखो so the greenhouse effect is a natural process where certain gases in earth atmosphere trap the heat keeping the planet warm enough to sustain the life so the current average हम कहूचे with the greenhouse effect earth average surface temperature होची 15 डिग्री सेल्सियस जदि न थांता सीधा 15 रो गडी की केते माइनस 18 डिग्री को पड़ी थांता नेक्स्ट देखो an organism which can monitor air pollution जो organism आपनकर air pollution को monitor करि परिबो that means आपनकर दिल्ली रे फॉर्सियो लागि थिबो ताहाले एठी पचारि छी एठी आपनको इक्विपमेंट्स पचारि एटा आपनको organisms कथा पचारि जे आपनकर air pollution को कोन डिटेक्ट करि परिबो that means this is the आपनकर symbiotic organisms हम कहि परिबा जे कि highly sensitive हेइ थाइ सल्फर डाइऑक्साइड सहित and disappear हेइ जाय from heavily polluted कोन जोन्स रे ताहाली आपनकर लाइकेंस हेबे फंजी सहित आपन माने जानि संती आपनकर कोन हे गली ना डिग्रेड करिबारे आपनकर हेल्प करे फंजीस माने क्लियर चलो ए जो ब्रायोफाइट्स छ कोन जानिचो मते कहले ब्रायोफाइट्स माने कोन जानिचो ना माने गोटे लैंड प्लांट्स हमें कहि परिबा लाइक द मोसेस तो माने इंडिकेट करंती सॉइल ने केतिकी मॉइस्चर रहिला जदि क्वेश्चन आपनकू एठी जेंति पचारा गला कि an organism which can monitor the air pollution जदि पचार थांदा an organism which can monitor the soil moisture ताहाले आपण माने रिलेट करथांदे ब्रायोफाइट्स सहित ताहाली आपनकर ब्रायोफाइट्स थांदा algae सहित आपण माने जानिसंती एटा आपनकर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म गोटे जे कि यूटिलाइज करंती कोतरे ना प्रीडोमिनेंटली टू मॉनिटर द आपनकर algal bloom सहित वाटर न्यूट्रिएंट वाटर रे केतिके न्यूट्रिएंट्स अछि आपण माने कोठु पाइबे algal सहित हैला algae मानको सहित हां आपनकर ब्रायोफाइट्स को हमें एम्फिबियन प्लांट बोली भी कहू राइट चलो नेक्स्ट मते कोंतु
Which disease is caused by mercury pollutants in atmosphere? आसा mercury pollutants पचारछि कोन ना atmosphere रे या फिर वाटर सहित जहाँ भी हो एबे कहिथिले आपण मानकु एटा आपणकर कोठी स्टडी हितला फास्ट रे ना जापान रे दिस इज अ जापानीज डिजीज जापान रे आरंभ होइथिला हेपाटाइटिस अच्छा कहि देला मत देखि हेपाटाइटिस आपणकर कोठी हुए के कहबो हेपाटाइटिस दिस इज अ डिजीज हमर को ऑर्गन को अफेक्ट करे को ऑर्गन को अफेक्ट करे ना लिवर डिजीज जे कि ट्रिगर करे द प्रीडोमिनेंटली बाय द वायरल इन्फेक्शंस ओके ट्रिगर करे बाय द वायरल इन्फेक्शंस को रिलेट करेगा ठीक अछि पक्का एंड मते कहि जो फुलिस डिजीज कहूची ये आपनकर कोन कहूची दिस इज अ फंगल प्लांट डिजीज ये कि राइस क्रॉप मानु को अफेक्ट करे कोन हबो ना फंगल प्लांट डिजीज ओके एनीमिया रक्तहीनता एनीमिया कहले त माने कोन बुझुछो ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द कोन लैक ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल ताले हम कहि परिबा ब्लड डिसऑर्डर हैला चलो नेक्स्ट मते कोन मिनमाटा इज अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम आपनकर कॉज्ड बाय द सीवियर मर्क्यूरी पॉइजनिंग स्टार्ट हितला जापान रे 1956 रे मते कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम काहा को हम कहूचे दिस इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कोडा हब जल्दी मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हमें कहा कहबा माउंटेन को हमें कहि परिबा कि दिस इज हाईली फ्रिगाइल हमें कहि परिबा एनवायरनमेंट माने वल्नरेबल टू द रैपिड कोन लैंडस्लाइड्स को नेकी बट मोस्ट स्टेबल हमें कहा कहि परिबा ओशन को कहि परिबा इट इज वास्ट इन साइज स्टेबल केमिकल कंपोजिशन आल्सो एंड थर्मल आपनकर बफरिंग जोन रे कैप्टिविटी जोन रे हमें भी ताको रखि परिबा हैला चलो so rahila apankar kono na marine ecosystem is the largest and most stable ecosystem on the earth and it's a great ecological significance too next kon koichi na the first biosphere reserve in india was first biosphere reserve apankar india re koda chwa jaldi first biosphere reserve apankar koda koichi na nilgiri biosphere reserve kono nai mate ko koda haba samastingar answer nilgiri biosphere reserve haba केबे आपनकर एस्टैब्लिश हेतिला मन रख आपनकर ये पार्ट ऑफ कोन ना तमिलनाडु रे एस्टैब्लिश हेछि 1986 रे सब ईयर वाइज आपन मन मन रखिबे नॉट ओनली कि तमिलनाडु ता सहित आपन मानकर की अछि ना केरला अछि ता सहित आउ की अछि आपन मानकर ना कर्नाटक भी अछि एंड एटा यूनेस्को मैनेड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम अंडर रे जाउछि हला क्लियर ए जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपनकर अछि ये आपनकर केबे कोठी अछि केबे एस्टैब्लिश हेतिला की कहि परिबो नंदा देवी सेकंड वन 1988 रे कोठी आपनकर उत्तराखंड रे यदि हजारीबाग बायोस्फीयर रिजर्व कोजी हजारीबाग जेल आपनकर कोठी थिला हजारीबाग जेल सहित हजारीबाग को रिलेट करिवे कोठी गोपबंधु जाई कि रहिथिले झारखंड सहित रिलेट कराई देबे अनारे मध्ये कोन कान्हा हेला आपण माने सुनिसंदी कोन जन्मरु आपण माने सुनिसंदी मध्य प्रदेश रा कान्हा एमपी रा कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व हैला नेक्स्ट चलो सो ये रहिला आपण इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1986 आपण तमिलनाडु केरला कर्नाटक रीजन यूनेस्को मैनेड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम रे आपण ऐड हे जाईछि नेक्स्ट मते कहि दियंतु द कार्टेजना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग सेफ यूज ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ काहा को नै कि आपण कार्टेजना प्रोटोकॉल अछि कार्टेजना प्रोटोकॉल डील्स विथ काहा सहित के कहि परिबो न्यूक्लियर वेस्ट को नै कि जदि आपण को कहा गला ताहाले आपण कोन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहितली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहितली इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कहिले आपण मानकु कोन ना सीबीडी को कहितली माने आपनकर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल कोन डाइवर्सिटी सहित जदि आपण को कहूची लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ताहाले कहि परिबा this is a biosafety agreement regulate करूची the safe handling and the cross border transfer between the कोन geographical modification organisms हैला देखो सो ये आपण को रहला द एनोमस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भीतर रिजल्ट करूची फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके the primary goal कोन ना प्रोटेक्ट करिवो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क posed by the LMOs माने LMOs माने आपण को कोन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स सब एस्टैब्लिश करूची एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट नेक्स्ट मते कहि दियंतु as recently the population of which species has been doubled in Silica Lake
रिसेंटली आपणकर चिलिका लेक रे पॉपुलेशन डबल हो जाइए 150 क्वेश्चंस हेइथिले भलो हेइथांता तमे तो कहलो मैम स्पीड जीवा मो स्पीड गली आस पॉपुलेशन डबल हो जाइए रिसेंटली चिलिका लेक रो ताकू आमे काहाकू रिलेट करेबा ता माने आपणकर कोन जो इरावदी डॉल्फिन आपणकर रहिचंती ओडिसा फेमस ब्राकिस लगून रेकॉर्ड करूची फॉर द इरावदी डॉल्फिन का क्रोकोडाइल हैला कैटफिश हैला टर्टल हैला हमन को रिलेट करिबानी ना तो आपनकर सिग्निफिकेंटली इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन ड्यू टू द सक्सेसफुल कंजर्वेशन मेजर्स रे आपनकर डेवलप हो जाइए सी the based on the recent census data from Chilika Development Authority, the population of Irrawaddy dolphin in Chilika Lake saw a significant increase, nearly the doubling in recent years due to the conservation efforts and the removal of illegal prawns, gheris, enclosure, which expanded their undisturbed habitat. Good news आपण मानको पई क्लास 10 रे तो अगेन कहूची छुआ 1999 देखि OPSC ASO बैच आपण माने जॉइन करि परिबे अनुशासन बैच एंड जदि आपण माने चाहउछंती सहकारी बैच नै पई जूनियर असिस्टेंट पे प्रिपेयर करूछंती 1199 देकी नै परिबे एंड 399 देकी पुलिस एसआई बैच जॉइन करि परिबे कोनोसी बैच जॉइन करिया को चाहउछंती किछि क्वेरीज अछि 8280832825 को कॉल करि परिबे else 9124730510 मते व्हाट्सएप करके जणाई परिबे एंड here is my insta id Sudipta GK network you can follow me there. Thank you guys. Try करूथिली बाटा जे नै जिया पई बट सॉरी गला क्लास एक्जेक्टली 150 टा क्वेश्चन आनिया थिला नो वरीज आउ गोटे सेशन नै आसीबा आपण माने राजी तो आउ गोटे सेशन आपण मानको पई बहुत जल्दी नै के आसु डोंट वरी मे बी नेक्स्ट संडे व्हाट्स से नेक्स्ट संडे नेबा डेफिनेटली स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट संडे सेशन 2 नै के आसु मु क्लाइमेट एंड ईवीएस रा ओके रेडी स्टेडी गो चलो आज जाओ एतिके पाठ पढ़ देलो टिके रिवीजन करि दबो आराम से टिके खाई पी के रेस्ट नबो ठीक अछि ना कोन कहउछो डेट केते रे 21 ओके चलो मैम नेक्स्ट टाइम एनवायरनमेंट ऊपर करंट अफेयर्स रिलेटेड आनिबे सीजीएल मेंस डेफिनेटली स्केयर एज यू सेड नेक्स्ट संडे आपनकर सेम मु आनिबी बट करंट अफेयर्स रिलेटेड जहां सब आपनकर इवेंट हेछि सेटा को देखि ठीक अछि यस करंट अफेयर्स रही आनिबी नेक्स्ट डोंट डेफिनेटली आनिबी हमको आउ थरे कहिबा को पड़िबा थैंक यू सो मच गाइस चलो एंजॉय करो संडे अछि हैव ए वन डे राति रे पुनी केडी सर का क्लास अछि सो ट्राई टू बी देयर टिल देन टेक केयर गाइस गुड नाइट हैव ए गुड डे एंड हैप्पी फादर्स डे अगेन एंड अगेन बाय टेक केयर गाइस एंड आई लव यू ऑल सॉन्ग सॉन्ग कोन गाइबी तमोटे कुह गाई देबा एटा गोटे कथा सॉन्ग 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 वो गोटे गीतटे हेले गाइबा कौन संडे रे अच्छी गाइबा गोटे आ तिनाक तिने ताना मन को आसुनी कि मो जगह कालिया मु जानी रे से गीतर माने ट्यून जानी लिरिक्स तो बाहर जो ट्यून जानी हाँ
Good morning, Samanita. Time to goodbye. ହେଇଯାଉ କୋଉଟା କାଲି ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି କଣ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବି ବୋଲି ବଟ୍ ତମମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପଳେଇଲା ଏଇ ଝୁମା ଝୁମା ଗୋଲାପି ବେଳାରେ ଏଇ ଝୁମା ଝୁମା ଗୋଲାପି ବେଳାରେ ସାଥିଆ ମୋ ସ୍ମୃତି ନେଇ ଆହୁରି ନିଜର ହୋଇ ହଜି ଯିବା ଆପଣା ଭିତରେ ହୋଇ ଝୁମା ଝୁମା ଗୋଲାପି ବେଳାରେ चलो सेफ्टी सी आने हला चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच चलो बाय बाय टेक केयर मोर अलिया बाला आसलानी म अलिया देख चलो बाय